Good morning, everyone. Good morning, everyone. Our chief guest is in the college, she has reached the college, and she'll be here in another 5 minutes. So I request you all to please settle down. Please take your seats, everyone. Our chief guest is about to come. So all of you, please sit down. Please take your seats, girls. Our chief guest has arrived. I request you all to please welcome the guests with a huge round of applause. I request the guests to please take their seats. A very good morning to everyone present here. Respected Director Ma'am, Principal Ma'am, Chief Guest, Keynote Speaker, Resource Persons, fellow colleagues from different colleges, research scholars, and my dear students. A very warm welcome to you all. I am Dr. Priyanka from Department of English, your host for today's seminar. It's my absolute pleasure to extend a hearty welcome to each one of you present here at the National Seminar on Scientific Innovations, Technology and Economics, Interface for Sustainable Future in India. We are thrilled to witness such enthusiastic participants and highly learned audience gather to deepen their understanding of this significant topic. Today's seminar aims to bring together the brightest minds from academia to explore the critical intersection of scientific innovations, technology, and economics. As per the tradition of our college, we seek the blessings of Almighty before starting the program, and for the same, I request the students of Music Department to come on the stage for college shower. I request you all to please stand up and cover your heads for college shower.
our honor and privilege to have with us today Professor Upasana Joshi, Honorary Director ICSSR Northwest Regional Center, as the chief guest of today's seminar. It is indeed a matter of great pleasure and distinct honor for the GNG family to have you with us, ma'am. As our keynote speaker, we have with us Professor Anish Dua from Department of Zoology, Guru Nanak Dev University, Amritsar. A very warm welcome to you, sir. For the formal welcome of our guests, I request our worthy welcome, Upasana, ma'am. Welcome, sir. कोई शरणागत आवे सबरी भरपूर पावे ऐसे तुम्हारा को अनुभवे होता नंदन दिल गुटावे देव देव बेटी नाम रखा भगवानो दर्शन राम करता देव देव Lamplighting symbolizes the illumination of knowledge and wisdom. May the light of this lamp keep illuminating our journey to progress and growth. Thank you, everyone. I am honored to have the pleasure of introducing our esteemed chief guest to this gathering of distinguished scholars and experts. Dr. Upasana Joshi Sethi is an Honorary Director, ICSSR NWRC Chandigarh, a Professor in University Institute of Applied Management Sciences, Punjab University, Chandigarh. She is an accomplished academic professional with over 25 years of experience in teaching, research and administration. She is known for exceptional presentation, research and communication skills with a strong commitment to optimizing the academic journey of students. She is a specialist in human resource management and organizational behavior, with 7 years of academic administrative leadership as head of department, contributing significantly to the academic community. Now about her academic background. She has a degree in MBA, a postgraduate diploma in personal management and industrial relations, is a UGC NET qualified, and is a PhD in management. Her areas of specialization are human resource management and organizational behavior. The administrative responsibilities she has held are: at present, she is an Honorary Director, ICSSR NWRC Chandigarh. She is an ex-director of the University Institute of Applied Management Sciences, Punjab University. She held that post from December 25, 2017 to December 24, 2020. Her contributions include developing UIAMS as research center with the introduction of doctoral program in 2018 and launching a pioneering MBA program in capital markets. She has organized 2 faculty development programs, 5 workshops, 1 national seminar and a short-term course
during the tenure of director as UIAMS. She had coordinated the SWAYAM program, establishing the infrastructure for online course delivery. She has an active participation in key Punjab University committees, including national digital initiatives in Haryana education, in higher education by MHRD, Skills Development Board, Research Board in Faculty of Business Management and Commerce, Board of Studies in UIAMS, Postgraduate Board of Studies in Business Management and Commerce, Student Aid Fund Administrative Committee, University Leave Committee and University Investment Committee. She served as head of Punjabi University Regional Center for Information Technology and Management, graduate studies in business management and departmental purchase and administrative committees. These responsibilities included coordinating admission processes, anti-ragging initiatives and departmental purchases. She has got published more than 55 research papers in Scopus Index, ABDC and UGC Care listed journals. She has authored 2 books, namely India's Global Ascendancy, Confluence of Innovation and Sustainability, which got published in 2020, and Antecedents of Leadership Behavior, its influences on quality of work life and organizational commitment, which got published in 2009. She has led major research behavior in the telecom sector. She has supervised and guided 11 PhD research scholars. She is a member of editorial board and reviewer of various national and international academic journals. She is the recipient of the prestigious Kulpati Award for securing the overall first position in postgraduate diploma in personal management and industrial relations at the Rajendra Prasad Institute of Management and Communication. She also has an active involvement in selection committees as a subject expert for affiliated colleges and also contributes to inspection committees to various colleges of Punjab for granting affiliations. We are indeed honored to have you with us today, ma'am. Now I request worthy Principal Dr. Narendra Kaur to come on the dais for welcome address. Good morning to all. Honorable Chief Guest, Professor Upasana Singh, Director, CSSR, Northwestern Regional Center, Punjab University, respected Director Dr. Bridget Gandhi, resource persons of the day, Professor Anish Tiwari, Department of Zoology, Guru Nanak Dev University, Amritsar, and Professor Pradeep S. Chauhan, CISP, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and all dear participants, very warm greetings to you all. I, on behalf of Guru Nanak Girls College, extend a delightful and inclusive welcome to each one of you in today's one-day interdisciplinary national seminar on scientific innovations, technology and economics in shaping a sustainable economy. By fostering interdisciplinary dialogue, it aims to explore innovative solutions and calculated approaches which are essential for long-term environmental and economic sustainability of India. But before we embark on today's journey of research, I will briefly introduce Guru Nanak Girls College. Established in 1973, the college stands a testament to the visionary leadership of its founder, San Nishchal Singh Ji Maharaj. At the time when women's education was often overlooked, he recognized the need to provide not just elementary but higher education to girls. Today we take immense pride in carrying forward his legacy of empowerment and academic excellence.
Affiliated with Kurukshetra University, Kurukshetra, the college holds the highest NAT CGPA score of 3.10 in district Yamuna Nagar. Committed to providing quality education, we offers a diverse range of programs across humanities, science, commerce, information technology, biotechnology, computer science, mass communication, and multimedia. In response to the growing need for skill-based education, we provide 39 UG courses, 14 PG courses, and 9 career-oriented programs, including vocational courses. College has fleet of 9 buses for students from nearby villages within a radius of 50 kilometers. Ours was the first college under KUK to introduce the 4-year integrated BA B.Ed and BSc B.Ed programs in 2019. Campus 2 of the college is at a walking distance from the main building for sports activities. With these words, I once again extend a warm welcome to all of you, and I hope that today's seminar will establish a new milestone of success in the realm of academia. Best wishes from our GNG family for a successful and insightful seminar. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Meena Goyal, convener of the seminar, to please come on the dais and introduce us to the theme and objectives of today's seminar. Honorable Chief Guest, Keynote Speaker, esteemed resource persons, delegates, and dear participants. It's my pleasure to introduce the theme of the seminar, the scientific innovations, technology, and economics interface for a sustainable future. As we stand at the crossroads of immense challenges and opportunities, the relationship between science and technology and economics has never been more crucial in shaping a world that is not only innovative but also sustainable. At its core, this concept leads to the critical intersection where advancements in science and technology are harnessed to address the pressing environmental challenges of our time, while also fostering economic growth. However, this growth must be mindful, preserving our planet's resources. Explore may range from renewable energy technologies, circular economy practices, smart agriculture, green building technologies, market incentives, and supporting policy frameworks. But Senior International Faculty of the Art of Living and teaches advanced level programs. He has taken his voice of concern to various local, state, national and international levels, including 3 times in United Nations offices. Dr. Dua, through his teachings, writings and charismatic speeches, has inspired many across the world and has had an impact that is significant. He is well embedded in the society through his continuous work and is a powerful leader who is inspiring many to live life meaningfully. An author who has diverse array of writings to his credit that range from specialized scientific research in the field of environment to being an expert on different aspects of life. Dr. Dua writes extensively in specialized journals, newspapers and social media portals. A public speaker who has over 30 years of acumen in public speaking, he can captivate audience with his thoughtful voice and English. We also got the opportunity to listen to Dr. Dua in our college thrice before, and it was always a pleasure to listen to him. His accomplishments are too many to enumerate here. All I can say is that we are lucky to have him with us today.
Now, I won't stand between our learned speaker and the audience who are eagerly looking forward to listen to him. The title of his keynote address is Science Education and Scientific Temperament. So, sir, I invite you to the dais. Thank you for the opportunity to be here with you all this morning. I'm not sharing any personal research outcomes that I have done for the years, but I'll just speak and share with you some insights which are relevant to today's national seminar. I would like to share these minutes where we collect shaping the way individuals perceive the world. In that sense, the founder of this college was a great scientist in that sense, not from the subject of science, in that sense, not from the subject of science, but at least having the scientific temperament. If only we are receptive, and not we are receptive, I do not know how many of you are, and I'm sharing this thought with you. The best has already been said for the seminar. Right in the beginning, when the students with their heads covered, their voices being, I would say, even accentuated to another level by the instruments, when they say the words of the Guru, probably the best of the seminar has already been said, was all, that we all need to be moving in a particular direction when we do what is should. I do not know, please forgive me, the front line, if I will be addressing more to the students, because ultimately it is for them. Most of us, we have undertaken our journey. Howsoever conducive or howsoever antagonistic that particular situation to you is, if you have that confidence, which comes again from the Mool Mantra, from our Gurus, you can't be a person with a lot of money in your pocket and signatures carrying a lot of power with you if you have fear deep within. If you are fearful, you are not successful. And as a science student and as a science teacher, all these 3 decades in the higher education arena, in the domain, thanks to my teachers, thanks to my parents, and thanks to all those people who made me what I am today, I could keep that fearlessness alive in me. You can't break my spirit, whatsoever is the situation around. I'm not saying it from the space of being a haughty guy. I'm saying it from the space of being a very proud social denizen here in this society. And somewhere all these years, when I was going and giving the talks in the seminars and the conferences, people said it to me, Anish, you don't look like a scientist, you look more to be coming from social sciences. I said, what do you mean? Is it that the science students and the science teachers have to be cut off from the society? I'm a zoologist in the classroom. But the moment I walk out of my department or I walk out of the classroom, I'm a social being. And how can I keep the two disconnected? And the social issues are as dear to me as these are to the student of sociology and public administration and political science and so on and so forth. So in that sense, when I got this invite for this national seminar, and ma'am asked me, Anish, what would be the title of your talk? I saw all these 3 aspects there: scientific innovations, technology, sustainability. I was like, this is, if I can summarize all these things, this means the scientific temperament.
Science is just not a subject or a domain. Along with science and science education, what we have is something called a scientific temperament. And that's how, ma'am, I hope you appreciate it. That when I shared the title with you, I said I'll be speaking on science education and scientific temperament. Immediately after this session, or even while sitting in this session, you might have this tendency to Google it and know what exactly does it mean, but I would say take a pause, do it later, be with me please for a few minutes. I would not bore you, but I would bore you. I do not know whether you understood the difference between the two words. The way we study science as a science education, as a science subject, we need to sitting in the front row as teachers and sitting in the rows. You and I had never heard and thought of that someday in this country, graduates from institutes like the highest out of place citing anything. What is this? Statements like these from the students and from the industry. Hey, we are not looking for what tag lakh rupees for picking up a degree, but you are no good for us. We are living in these uncertain regions, many. And when I say that, I had the good fortune of spending nearly half an hour in Director Ma'am's room, and we were having exchange of ideas and conversations. Out of 10,000 in human resources, there could be 9,000 who could be mediocres, who could be picking up jobs and the titles and the work profiles of a particular kind. They would in any which way, because the society needs their contribution in one way or the other. My concern is, of those 10,000, if there are 10 who could become the global leaders, are we providing the right kind of conducive kind of environment around them or not? And when I have said this, each one of you sitting in the last 7 rows as students should not think about you as amongst those 9,000. You should be thinking about yourself as a global leader. It's the ordinary people who came from the ordinary backgrounds, they became the most extraordinary global leaders. And we Indians have that spirit with us. Each one of you can contribute big in the global scenario. Don't you restrict yourself to your small area of influence, being in Yamuna Nagar or being in Haryana or being in north of India. I travel all over the world. This summer I was in the Oceania region, and I met a girl who's from Yamuna Nagar. I moved to another city in another country, I met another girl from Yamuna Nagar. And they're doing beautiful work. 2 girls, I do not know. I didn't bother to ask them which college did they graduate from. 2 girls in New Zealand, Australia, I met. They're both from Yamuna Nagar. One contributing big time as a content writer, working with the government. They moved from there. I'm not saying you go to Australia or New Zealand. Please don't read me wrong. I'm just citing something, and please take it in the right spirit. Coming back, when I gave the title, it was Science Education and Scientific Empowerment. Having had given the prelude or the preface to what I mean and what do I imply by scientific temperament, let me read a few lines, and please, let it not be like verbose words from me and you are a passive audience to that. Each word has a meaning. When I say that science education plays a pivotal role
in shaping the way individuals perceive the world around and how they interact with it. Studying botany and zoology is not studying about plants and animals alone per se, picking up how to classify them, what exactly is the biological component in them, how do they breed. Not that, but going a step beyond, how do we interact with them? It's not merely about memorizing facts or equations, but about fostering a scientific temperament and an approach that emphasizes curiosity, critical thinking, inquiry, and a rational outlook. Let me just share it with you. When I was in class 9th in school, a government school in Himachal, I studied from Punjab School Education Board, in a school which was Punjab School Education Board, but was operating from the Himachal territory. You know that before a particular year, this all was one state. States came into existence a little later. In the 9th grade, mark the moment, I remember my science teacher's name even today, Madam Vanita. She used to teach us science, and she would not tell us about the protozoans and the fungi and all those kind of things. She says it and cockroach dissection. We did cockroach dissection at 9th and 10th standard. She says, tomorrow, all of you get one slice of bread from home. One slice of bread from home. In those days, every house was not a bread eater. The bread loaf, I think. These were all chapati and rice eaters. जिन्ना ने घरां दे विच भी कदी ब्रेड नहीं आई, वो भी बाजार जाके ब्रेड खरीद के लिया, क्योंकि मैडम ने क्या कल एक स्लाइस लेके आई। Are you with me? Are you with me? Yes. Back seats on top. You can say yes or no. All carried a slice of bread to our science lab. I'm talking about the year 1983. And she says, the lab was as big as this hall. In the school I'm talking about. She says, mark your place and put your slice of bread there, and on a slip write your name and add that as a kind of a legend or a title, or this is my slice. Young students, 13 years of age. Next week she asked us, go back and look at your slice. When we looked at that, it had black fungal molds on these slices. Are you listening, brother? How is it that in this air are suspended spores of the microorganisms which each day you and I we inhale? That was the best way of demonstrating in the classroom. That out of thin air, these spores, the microorganisms, they can grow on something where the nutrients are high, the bread cells. It was an education for me. 1983 to baad to laake 2025 as of today, I'm not going to leave anything uncovered in my refrigerator. You just have leftover from your meal, you put it in a bowl and you just put it in the refrigerator. If that goes bad, that means you are contaminating everything that is lying in the refrigerator. She, in a very successful manner, through that science education, nurtured, ignited in us young minds to be having the scientific temperament. Are you with me? Yes. That's how I would say
teachers, us teachers as in the classroom need to be, and that's as students, us students in the classroom need to be. And if only we can bridge this gap, the society can be of a particular kind. I'm just citing a very small example to you. But I do not know whether it is reaching you and it is having an impact of a particular kind. That's what I mean. Science education and scientific temperament. Science education is the process of teaching and learning science concepts, theories, and methods in the classroom. The goal of science education is not only to equip learners with knowledge, but to nurture skills that are essential for addressing real life, real world challenges, from environmental concerns to technological advancements. None of you have the option available with you to say, oh, I'm from a small town. Oh, I'm not, at least you are in the district headquarters. You can't say that I'm not in Chandigarh, I'm not in Delhi, I'm not in Kurukshetra, which is on the national highway. We are a small district headquarters away from the. You don't have that luxury of being into that self-pity and telling, oh, we are lesser good. No, you are not. And I'll give you an example of that. 5-7 years senior to me in the Punjab University, Chandigarh. Ma'am, am I allowed to drop this? Dr. Rajiv Kalsi. His PhD in wildlife from Punjab University, Chandigarh. He and his lovely wife, Meenu, they started working in Yamuna Nagar, GNGCollege. Ma'am. A person like me went from Chandigarh to Guru Nanak Dev University, Amritsar, from a university to a university. And a university which is an excellent center of learning. I'm talking about Amritsar. And if I can call him a colleague, and a friend of mine, he moves from Punjab University, Chandigarh to Yamuna. 35 years down the line, if I may say so, he's a better scientist than I am. Being here in this town, Rajiv single-handedly, with his scientific temperament, could successfully get the title of Kalesar National Park to the neighborhood wildlife protected area that you have right next to Yamuna. He went out there, started watching birds and so on and so forth. He started hobnobbing with forest officers. That's how his work reached Delhi. And together they made sure this particular area gets its wildlife protection status. That's scientific temperament. And it has nothing to do that what is the size of the city and what is the cultural conditions around you. What I'm saying here is you have absolutely no option to self-pity. You could be anywhere and you are the best and you could contribute back into the global scenarios. The key components of science education, as I say, are the first and the foremost is curriculum, the syllabus. You as a college affiliated to a university, you do not have the freedom to redo your syllabi. You have the direction coming from the university and from the university system, so I know it. You might not have the option of whether to sit in this conference or not, because the teachers asked you to sit in the seminar, so you are sitting there. You didn't have the option. But how do you sit there? You have the option. You could see these 30 minutes, these 40 minutes, this half a day as a compulsion, as a burden, or you could see this as an opportunity for you to be taking a completely different direction, where your life
opportunities and your life fate is redefined in today's first half. Depends on you. बड़िया ਲਈ एक ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ leaders like us, social leaders, academic leader, academia, we are here for. We are not here for listening to our praise from the stage, or so and so has done this. We are not those kind of resources who are self-obsessed, who want to listen to the generous introductions that are given about us. We are not those kind of resources. We are here to inspire you. Ma'am, am I taking it in the right direction? I'm again now addressing you to the first 2 or 3 rows, teachers. I was the most thrilled guy in masters in zoology in the practical class where they gave us five fishes. I'm a fish biologist by training. And gave a taxonomic key, identify these fishes. Somebody who's not coming from fish-eating family, मछलियाँ सारी मछलियाँ नहीं, उन्होंने कोई नाम नहीं है. As a scientist, you put names to them, you classify them, you put them into class in the family and the order, and so on and so forth, up till the level of genus and the species. They gave us a beautiful, beautiful taxonomic key of if it has scales on its body, go to number 13. If it doesn't have scales, go to 6. And from 6 you identify this, go to 52. If it has this, go to... Like that, you have a key that guides you what exactly is the name of this fish. And when I identified those fishes, and with the name written, gave it to my teacher, and he just put a tick on that, I was the most thrilled guy. How this piece of paper can help us in identifying and knowing what is the name of this particular species. The way that development happened in the way I teach it, may God bless him. The way he was taking that practical class and the way we as students were sitting in that particular class, it was a lifetime moment to remember that, oh, this piece of paper, this curriculum, in the syllabus it is written, identification of the fishes. That's it. But how do you handle it in the classroom? That choice rests with you, whether you are from a college, or you are from a university, or you are from A grade college, or you are an ordinary college, whether you have the facilities or you have no facilities. The temperament and the way you look at the situation redefines or defines everything else. So the way the curriculum is handled, the science education, that's something which is very, very crucial that each one of us as teachers and the learners we need to be paying attention to. Then is the teaching methodology or the learning methodology. Gone are the days when a teacher for 55 minutes or 60 minutes would teach it in a particular class and students would look at the teacher like this, whether they are getting any sense out of it or not. We are not living in those times. Why? Because teachers' role today is not only to provide you information, it is to interpret that information. I do not know whether you are getting what it means. Information probably students have much more than what we have. You see, we come from a particular time where there used to be only one book in the entire university. One book in the library, central library, and that book is with the teacher. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਬਾਅਦ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਓ. You need to sit in that class and you need to listen to the way the teacher interprets that particular subject. I'm talking about methodology. Methodology just in the classroom is not enough today. The best of the educational institutions, we are going beyond that. Now, in the light of that, listen to what I have scribbled here.
Teaching methods employed in science education play a crucial role in how well students grasp scientific concepts. Approaches such as inquiry-based learning. I'll be the happiest teacher if my students keep on asking questions from me. Are we encouraging that kind of a space in the classroom? The question that we need to ask to ourselves. As teachers in the classroom, we are not to make them sit as mute spectators. The spirit of inquiry has to be encouraged in the students, and students need to ask questions about the topic that they are studying on that particular day. Project-based learnings. Oh, this is the syllabus, this is the subject. Go, make a project on that. Go make a report on that. Do research. Research is not only in PhD. Today you could do research on what name is more familiar to you, your generation. You could be doing a research on Aryabhat. No. Look at 1,000 resources available on the internet. That's called research. Research is not that you enroll yourself for PhD and then only you do research. You could be doing research on any topic. The methodology would be different. So the same syllabus, teaching, learning methodology in the classroom, what we call as pedagogy, than traditional lecture-based methods. As third-year BSc Honours School students in the Punjab University, every student was taken. Zoology, animal sciences, sitting in Chandigarh. You only have exposure to fisheries. You only have exposure to inland, freshwater fisheries. You know nothing about sea. You know nothing about marine life. Look at Punjab University, visionaries who designed the syllabi. Every student in their third year would go to a coastal area trip. You go to Yamuna Nagar, you go to Cochin, you go to Tiruvananthapuram, you go to Kanyakumari, you go there, you go to the fish landing centers, you take a trip into the sea, you collect the animals. Today you can't collect them. Times have changed. What I'm saying here is, teaching has many ways, and we just need to go beyond what we only do in the class, what is called as classroom teaching. Then comes assessment. Evaluating students' understanding is central to science education. All of you who are from the sciences subjects, you know that when we do the practical in the class, along with the experiments that you perform, there is something called as viva voce. Yeah? You have done your PhD, you have done your MPhil, you have done your masters, but then it is not that the work that you have done, it has been evaluated and it is the end of the game. No. And an evaluator comes and evaluates you, and from there that they ask. My submission to you would be, it's not students, it's not enough that what do you know. Taking it to the level next, that whatever you know, what are you going to do with it? I'll just, in the lighter veins, say something beautiful to you. I went with my partner, with my wife, to a store, this is about 20 years ago, and he asks her, the guy in the shop, "Sir, kya karte hain?" So she says, he's a fish and wildlife expert. So he says, "Usme kya karte hain?" So she, in her own way and in her own understanding, explained it to him. We are the ones who found dolphins in Punjab. I thought I'll speak the language that he understands. I said, we look at the tigers and the lions and the birds and this man asks the most beautiful question to me. He says, "Sir, for मच्छियां ते पंछी ते टाइगर दे सरकार ने पैसे देंगी?"
If you can't convince and explain it to this layman in the society that why is it that your work is important and why is it that you are getting a proportional money. The same happened with me when I got the biggest house in the university in Guru Nanak University, man. I got the biggest house, A-type house you call it. Yours is A lower, the E top. We have the E lowest and the A top. When I moved to the A-type house, a friend of mine said, Anish, मैंने never देखा क्यों नहीं इसका देख लियो. Do you know what I had to tell it to him? I could have said it to him what I said it to that man in the jewelry store where I was there with my wife. To this friend of mine, he said, what do you do? I said, we think. We don't work with our hands and with our muscles. We are the thinkers in the society. The front two rows. Are we thinking correctly and are we steering and taking the generation next rightfully in that particular direction to be great thinkers? The question that we need to ask, and is something that you need to ponder over when you are pursuing your subjects, whatever you are. And then the last part that I would say would be technological integration. In today's time, you can't say, oh, I know it, but I'm not going to use technology. Thanks to COVID times, everybody learned how to use technology. People who can't read on the screen, they are the best users of the screen. In this country, there are people who can't read English in the Punjabi, but they are doing their financial transactions on the screen. One of the leading computer companies, I'm not dropping their name, they did a social experiment. In the remotest of the remote villages of India, what they did was, if this is the entire village and desert area begins from here, a kilometer down the line in the deep desert area, they made a room. One room, which had no door, which had no window. And on that particular room, they installed a touch screen. Imagine this is the room and you have a touch screen there, powered through solar systems or whatever, technology, internet, everything. And they started watching it with a camera installed on the top of the room. This is a social experiment. They saw on the first day or on the second day of this, one man, one boy, young boy came and he touched that screen and he started seeing, oh, this happened, this happened, this happened. And this guy, he's not going to any school. He started doing and exploring the screen through the internet. He started going to one thing or the other. And he ran to his village and he brought 5 guys along with him. And they all started exploring it. Within 1 month, the whole village was using the touch screen and exploring it, and they became technology literate. Mark my words, please. They might not have a degree, but they are educated. I'm going from the spice of literate to education. And us people who are already privileged to be in the higher education domain, do we have the scientific temperament? That is the question that we need to ask ourselves. Integrating technology in our lives. And scientific temperament, when I say scientific temperament, refers to a mindset characterized by critical thinking. To the extent that the dictionary even calls it skepticism. Why? And openness to new ideas. It involves an attitude of inquiry and a willingness to question assumptions rather than accepting information at face values. Scientific temperament is essential for progress in both science and everyday life, as it enables individuals to assess information logically, make informed decisions, and approach problems with an open mind. I'm going to say one line and then I'm going to conclude. It is not important what do you know or what do you have.
What is important is what do you do with what you know and what you have. That is something which is the most important part. Welcome, sir, and pleasure to have you here with us. I took a moment of pause so that we settle. May I continue, sir? May I continue? May I continue, sir? Yeah, sure. Thank you. So, along with science education, both for teachers and learners to be of a particular kind, do we have that scientific temperament where we are open to new ideas? And in the society, if I look around me, people who are great listeners, mark my words please, people who are great listeners, people who are great observers, they are more scientific in terms of their approach, they have more scientific temperament. Vis-a-vis somebody who's very rigid. You can't be a rigid guy and being a scientist. Because you've already locked yourself away from the possibilities. You need to be in that space of being open that I could be wrong. I have set an experiment and I could fail in my hypothesis. If you accept the failure of your hypothesis, you are a better scientist than somebody who says, no, I can't fail. So in that sense, openness, spirit of inquiry, and then integrating the belief system in a particular manner is something which is very, very important, which comes under the title of scientific temperament. To conclude, I would say, science education and scientific temperament are indispensable for the progress of individuals and society as a whole. By fostering curiosity, critical thinking, and a rational approach to problem solving, science education not only equips individuals with the knowledge to navigate the world, but also shapes the mindset needed for informed decision making and problem solving. Having had said this, you and I will need to know that it's not easy, it's not that smooth. We have a lot of challenges on the way. And we shall continue, we commit ourselves to continue to grow along with all the limitations and challenges that we have. We would not let it mar us or let it consume us. And I wish the seminar, the spirit with which they have organized the seminar, the organizing team, congratulations to the college, and our technical sessions shall happen, delegates shall share their own viewpoints on different topics of sustainability, innovations, and allied aspects. While you are deliberating on these topics, may something happen and may you grow. And when you grow, you do not grow alone. Many grow with you. And it's not only that you grow and many grow with you. Look at the possibility when you grow, many grow through you. That's my sincere wish. May you grow. May many grow with you. And may many grow through you. Best wishes. And once again, congratulations to the entire organizing team. And thank you, ma'am, for giving me this opportunity to be there with you all and share my views on this particular. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir, for such an engaging and enlightening keynote address. Your insightful remarks have set the tone for a productive and engaging seminar. We appreciate your valuable contribution, sir. We have been joined by a resource person, valedictory session, Professor Deepak Sharma, School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. I request worthy Director Ma'am and Principal Ma'am to extend a floral welcome to sir.
sir. Dear audience, due to her prior commitments, the chief guest, Professor Upasana Joshi, will take the lead now. Before she departs, I would like to invite her to share her valuable insights and words of wisdom with us. Professor Upasana, we are honored to have you with us today, and we would be grateful if you could spare a few minutes to share your thoughts with us. Please, ma'am. All the esteemed guests in the front row, Dr. Ravinder Gandhi, Professor Anish Stewart, Professor Deepak Sharma, Principal Ma'am, Dr. Narendra Khan, Dr. Tarunji, and all the faculty members who are here to attend this one-day national seminar on scientific innovations, technology, economics interface for sustainable future in India. All the participants, without your participation or presence here, no seminar would have been a possibility. So first of all, I would like to extend my congratulations, my best wishes to the organizing team, to Guru Nanak College, Girls College, for organizing this seminar in collaboration with ICSSR. So as you all know, this seminar is about sustainable development. So I just want to bring about some of the initiatives which are already taken by the Government of India to make not only India also, but you can say the whole world sustainable by 2030. So as you know, that this sustainable development word that comes from United Nations in 2015 when 17 goals were enumerated for sustainable development and 193 countries were signatories to that. Like agenda is to become sustainable or to achieve this sustainability by 2030. Government of India has already been on this process of achieving this. As the sir has already told that there has to be a thinking faculty or thinking, you can say, we need person, teachers should be now the thinkers. So Government of India has already taken an initiative by forming this NITI Aayog, who is the, you can say, collection of think tankers who are on their way to achieve this sustainable development by 2030. So many states are on the forefront of achieving this by 2030, that is the agenda. And I'm, you can say, honored to announce this at Haryana because this is Yamuna Nagar and now we are in Haryana and that is already on the view of achieving this by 2030. So there are 17 goals. I know there is very less time, but I just want to, name few of the initiatives that are taken by the Government of India to achieve this, like for example, the no poverty. So we all know how this trinity of Jan Dhan, Yojana, Aadhaar and mobile is there, that all are interlinked. So as to, you can say transfer benefits directly to the beneficiaries without any linkage. And everybody has an Aadhaar identity, so just to give an identity to each and every person in the society that they are valuable person of India, they are valuable citizens of India. And you all know like how technology is going to help that BHIM, UPI, RuPay card, Aadhaar enabled payment systems, these are taken by the Government of India. So these are the scientific innovations or technology that is taking place on the economic front to make India sustainable by 2030. Similarly, the Zero Hunger initiative is there. So here you can see ENAM is platform on which all the agriculture markets are, they are united. They integrate 1,389 mandis across 23 states and UTIs, 4 UTIs of India. Another initiative is like good health and well-being.
So here you can see the Ayushman Bharat schemes that is undertaken by Government of India. So Jan Aushadhi centers are there which can provide generic medicines to the society, and how the beneficiaries they can have you can see benefit up to 5 lakh rupees directly transferred to them if they are doing any kind of treatment, or they can take any treatment from the hospitals, or you can say dispensaries who are listed on Ayushman Bharat Digital Mission. Quality education is another SDG, and you all know that how we are taking advantage of that. You can see Swayam MOOCs platforms are there, and now you can have Unacademy, or you can name about anything, you Google it and you can have on your reach. Like already sir has pointed out, Professor Dua, that technology, even if you are not literate, if you are not have any, you can say formal education, but again then you can search or research what is there, what is required by you, so depending upon your interest and your temperament. Then gender equality is another SDG that is for the future generation we need, and you can see how much emphasis is putting on to bring equality in terms of caste, religion and gender also. You can see Mahila e-Heart, or you can say digital literacy programs that are initiated by Government of India, so as to bring the women, which you can say they have not, you can say, given the equality in the education or societies, just to bring them at par with their male counterparts. So here you can see again, digital Saksharata Abhiyan is there, women and startups are there, and it is now mandatory to have a women directors in all the companies. So these are all the initiatives that are already taken by Government of India. Clean water and sanitation is another thing. So you are aware of the Swachh Bharat Abhiyan, then Jal Jeevan Mission that is taken by Government of India again to bring about, you can say, growth or to achieve this goal by 2030, which seems like little difficult, but the government is already on the way to do that. Then affordable and clean energy, again we see that so much emphasis is now given on solar energy, wind energy, how to replace fuel energy by biomass energy or any other kind of energy, so as to reduce the carbon emissions and greenhouse effect. PM Kusum scheme, that is provide solar powered irrigation pumps to the farmers, so as to reduce burden on the electricity that is generated by coal. I would like to enumerate here that 5 lakh solar irrigation pumps are installed under Prime Minister Kusum scheme, and then solar power capacity increased from 2.82 gigawatt to 73.32 gigawatt in the past 1 decade. Next SDG is your decent work and economic growth, and here again you can see how many unicorns are there, startups are there, so as to bring, you can say, economic prosperity in the society, so as to make the youth like you, like the youth should not be power, you can say they should not be employment seekers, they should not look for jobs, rather they should be job providers, so that you can be entrepreneurs, you can be independent startups, venture you have to start on your own, so that you can generate employment for the others. The industry, innovation and infrastructure is another way. So again, you can see GEM portal is one way to bring transparency in the system, so as to reduce filtrage, to reduce any kind of, you can say, cut on tax collections. In here also again I want to quote some of the statistics, like 93.3% of households own at least one mobile phone, and 95% of villages of SC/ST persons are taken into consideration to reduce the inequalities based on gender or caste or religion. Then sustainable societies and communities, you can see like how smart cities are taken into consideration, so that any kind of improvement infrastructure must not create any kind of pollution for the environment. Then responsible consumption and production is another way. So here I have already pointed out ENAM projects are there in which national agriculture markets are there, Pan India. Then protection of life below water and above water, sir has already pointed out, so I don't think that I should put much emphasis on that. Then climate action, how to, you can say, conserve your
climate is another SDG. Here, India is the third largest greenhouse emitter globally and has committed to achieve zero emissions by 2070. And we are already on the way of reducing carbon intensity by 45% by 2030. And then we have peace, justice, and strong institutions. Here you can see we have e-law adalats. So as there is to e-court project, you are well aware of that, digital law adalats, so as to reduce the number. So all those persons who are waiting for justice from last 20 years or 25 years, some are even throughout their life they are waiting for that and they are no more. So this is also a kind of injustice for them. So this type of initiatives are taken to bring about justice and equality at that point. And then now last one is that Government of India is partnering with the other countries also to achieve these SDGs by 2030 so as to make our climate, or we can say environment, sustainable for future generations. So this is something I would like to elaborate about what is the theme of today's seminar, and I would like to congratulate the college and the organizing team for choosing such a relevant topic for the seminar, as we all are putting so much emphasis on making India digital. Digital transformation is also another way to achieve this SDG, because without digital transformation, the number of initiatives that I mentioned here, that can't be possible. So the initiative that has been taken by Government of India, digital infrastructure to improve e-governance, digital infrastructure, that is again a way towards achieving these goals. Now coming to ICSSR, like the sir has talked about social sciences or social scientists, you know that so much emphasis is put on STEM, research in STEM, science, technology, you can say, engineering, mathematics, but social sciences is also an equally important area, as we all know. Because all the policies, the initiatives I have mentioned here, they are based upon what is going on in the social area, social science area. So you have to be a very good social scientist also. Be you are, you can say student or your faculty of geography, or you can be of public administration or political science. So because each and every, all these disciplines are interdisciplinary. You can say one is, you can't read one discipline in isolation of the other. They all are interconnected. So that is required for benefit of the society. So that's why ICSSR, that is again an initiative by Government of India to boost research in the social science area. Because you can see a lot of grants, or you can say funding agencies are there to boost research in science or in technology. But when we talk about social science, funding is always an issue. So holding this type of seminars also, like if there is no grant, so sometimes it becomes not possible for the organizers, for this colleges or department to hold this type of seminars. So for that, funding is required. So mandate of ICSSR is to boost research in social sciences, to provide funding, provide grant to the colleges to hold this type of seminars, so as to, as already sir has pointed out, Professor Dua, to ignite the young minds, like how you can start thinking about this 1 hour that we are talking about, how you are going to take whatever discussions are going on in this seminar or throughout the day. So how they are going to benefit you, or to start thinking about like how you can do the research. So as we talk about the research, what is the research? Like searching what is already there. So as this Professor Dua has pointed out, you are searching about Alia. So it means that, are you able to hear me or not? Yeah, okay. So it means that information is already there about Alia. What is required from your point of view, that you have to search according to your need. So it means whatever is there in the society, like we are talking about Indian Gyan Parampara, Indian knowledge system we talk about. What is that? It means India is already a hub of knowledge, of any kind of, you can say, innovation. You talk about any kind of a discipline. We have the knowledge of each and everything here in India. विश्व गुरु तो इंडिया बहुत पहले से ही था. We all know about that, but we have forgotten our heritage और संस्कृति जो हमारी legacy है.
we have forgotten that. That is really unfortunate. So we have to revisit our past, we have to visit our being into leisure so as to regain confidence and proud in our Sanskrit. And research is required for that. Like you go and research what is already there, become proud of that, and make it relevant into the scenario. So as to take advantage of जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा पतंजलि को कौन भूला है nobody can deny the contribution of Patanjali, nobody can deny the contribution of Chanakya, Nalanda University, Gyan, Vishwa Bharati, सब कुछ ये we already had that in our society, but we have forgotten about that. So we have to bring that knowledge into our mainstream knowledge. And the mandate of this type of seminars, why we are going to organize these seminars, objective is to revive that knowledge, to bring that knowledge back to the students, to future जो हमारे torch bearers हैं, like Professor again I will cite him here, and that we have reached like where we want to reach. हमने पढ़ लिया, सीख लिया जो हमने करना था, but what is now required is what you are going to learn, okay? Because you have to pass this education, this knowledge to your next generations. तो क्या पास करोगे? जो लोगे वही लोगे ना आगे. So if you have like there is a saying, बारिश होती है ना? So there are two types of you can say possibilities. एक पात्र है, पात्र you understand like any vessel. One vessel is like this. तो उसमें क्या है जितनी बारिश हो रही है उसमें आ रही है. Another pattern is like this. You are putting the kada, whatever you call, na? That is like this. So जितनी मर्जी बारिश हो जाए 20 mm, 10 mm, not even a single drop will go inside that pattern. So that is now up to you. How you keep your mind? How do you want to keep your mind? You want to keep your mind like this? कि जो भी बारिश हो रही है, intellectual rain, what I say is here. You are going to take that, or you are sitting like this here in this seminar hall. You have to spend time and to back to your normal routine. Then what you are going to pass on to your future generations. जो हम भूल गए हैं हमारा घर, हमारी सभ्यता, what is forgotten I'm talking about. That is because of that, because somehow we were not as much, you can say resilient, or you can say that much informed about past, कि हम अपनी संस्कृति में अपना जो है गर्व महसूस करना हम भूल गए. We start imitating the Western culture, or you can say practices so much कि हमें लगता था वही ठीक है. But now you can see Western people they are also adopting yoga. हमारे यहाँ पता नहीं कितने योगा करते होंगे, but you can see how many of them they are following this routine so as to keep them healthy. So this is something which already we are proud of that, and we are, you can say, the initiators of that. Inventions तो हमारे यहाँ हुई है, innovation तो हमारे यहाँ हुई है, but Western countries they are taking advantage of that. So we have to now think about that, and for that, ICSR is there to boost the research. So number one, I just want to list a few of the schemes that are provided. One is that you can take a grant for this is for the betterment of the faculty, who is also here from different institutions, in the form of the seminars or conferences which you can hold in social sciences. Another is you can apply for projects also. So for the domain of social sciences only. So projects can be a short-term project, maybe for 6 months or 9 months, or it can be minor project that is for 1 to 2 years, or it's more than that your major project. And now the longitudinal studies has also been introduced by ICSS, in which your project has to be carried out over 5 or 6 years. So as to compare your results, your findings over a period of time. Like even if you are, for example, taking something in the domain of health services that are provided by the government of India. Okay, so one thing is that those who are registered under Ayushman Bharat scheme, so how many beneficiaries were there in the first year? How many beneficiaries were in the second year, in the third year, in the fourth year? So is there any impact over a period of time when number of beneficiaries are increasing or decreasing? How many types of treatments they are taking, benefits they are taking from this scheme? So as to study the impact over a period of time. Similarly, doctoral research schemes, they are available. One is postdoctoral research scheme, that is for those who have already completed their PhD, and one is for those who are pursuing their PhD. So they can take contingency. This grant is in the form of contingencies to meet their
expensive like data collection or analysis, or it is also for traveling purpose. Like if you want to visit libraries, okay, of different cities within the country. Like I used to share most of the time my own experience that days when we did I did my PhD, like we people used to visit libraries because at that time online journals are not as accessible now. They are accessible now these days. So we have to visit libraries and we are not allowed to issue the you can say journals or the reservation pieces which were already lying in the library. So we have to sit in the library. So whatever is according to our need, to हमें लगता था कि this is something that is relevant for my topic. So we have to sit in the library and note it down. उसको नोट करके आते थे फिर आके उसको टाइप करना. Now you people are in that age that on a just click of a mouse you can have reach to so many journals, so many let's say articles, presentations, and what is required is just copy, cut, and paste. But that's why now there are so many softwares there which are there to you can say uh, which are required to check plagiarism. So plagiarism is something which was not even you can say even this word was not coined at that time when we used to do research or we used to do PhD because it was not possible to this all is go hand in hand. So if you have advantage of so much resources at one place that you don't need to even leave your desk so you can do your ROL or sitting there. So many softwares are there like you will and say what's where is there. But at the same time, you can say softwares are also there to check your plagiarism also like how much you have copied from somewhere else. So this is something that the technology you can say is a type of grant that is available for the researchers, for students. And then you can also attend national or international conferences or seminars once in 2 years. Okay. So for that, your economy, no doubt, so you will be paying us economy fare plus registration for that seminar. So, but the thing is only that you have to apply at least 3 months before your program, like when you want to attend that program. So this is some advantage. Even students can also take research scholars. I don't know how many research scholars are sitting here, and the faculty can also take advantage of this. So this is available to both faculty as well as research scholars. Apart from that, colleges or university department, if they want to organize some programs for the persons who are renowned persons in their own, we can say, field, social scientists, what we call renowned social scientists. So ICSSR also offers them get again to and fro their travel and their stay, but wherever they want to stay. So all the expenses are borne by the ICSS. So you have to apply for that grant that you want to arrange. You can say a lecture of so and so on these days, and the person will travel from this place to this place, and for this so many days he or she is going to stay there. And it's always advisable that if you get collaborate with some other department also or nearby university or college, so you can another 2 or 3 institutions also take advantage of the same persons. So this is how some of the benefits is. I'm not missing out on anything. Otherwise also all this type of information is available on the website of ICSSR. With this first, I would again like to thanks also for inviting me to this seminar, and also I congratulate the college and principal and the organizing team for holding this seminar. And as you all know, ICSS are sponsored, so I would say this is my own seminar, so I will also again going to give you best wishes, and I will give my regards to the office also, to the college also for organizing this, and welcome to this seminar, and I hope that you will also participate in the technical sessions and make most of this. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for sharing your views. Now I request the director, ma'am, and principal, ma'am, to please present a Siropa, memento, and a token of love to ma'am. We
Huge round of applause for ma'am. We are thankful to you for accepting our invitation and sparing time for us from your busy schedule, ma'am. And with this, we come to an end of our inaugural session and will begin the technical session. I will take your leave now. For the technical session, your host is Dr. Poonam Saini. Thank you all for your attention and patience. Thank you. Over to Poonam ma'am now. Thank you, Dr. Priyanka. Good afternoon, everyone. I, Dr. Poonam Saini, extend a heartfelt welcome to you all. We are about to start our technical session now. This session comprises of an expert talk by our eminent speaker as well as paper presentation by our delegates. We have total 127 registrations and 72 paper presentations. We have assigned group numbers from A to F to the delegates who are to present paper. Information regarding this is already shared through WhatsApp. Presentation will be going on two separate venues. A, C and F will have their presentations in seminar hall, and groups B, D and E, they will present paper in computer lab first floor. Technical sessions in the seminar hall will be chaired by Dr. Ritu Kam, Department of Economics, GNGCollege Capital, and Mrs. Manjeet Rani, Department of Commerce, College Yamuna Nagar. Technical session in the computer lab first floor will be chaired by Dr. Dalbir Singh, Department of Economics, College Yamuna Nagar. Mrs. Sujata Sharma, Department of Geology, Government College, Panchkula. I request members of the organizing committee to kindly accompany our resource person to seminar hall and computer lab so that we may start presentations on time. And the delegates are requested to go to their assigned venues as per the group assigned to them. Further, you are requested to join us again in the auditorium once your presentation is over, as we have our valedictory session afterwards. So our volunteers are requested to guide the delegates to their respective venues, please. We are fortunate to have with us today some distinguished speakers who are noted figures in the field of expertise. Our next speaker is Dr. Pradeep S. Chauhan, Professor, Center for Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Due to some unavoidable circumstances, Dr. Chauhan could not be present here in physical, but he will connect with us virtually. And he will deliver his talk in the online mode. Dr. Chauhan has been a visiting professor. I hope Dr. Chauhan. Dr. Chauhan is a visiting professor to many world-renowned institutions, including University of Oxford, Paris School of Economics, University of California, etc. His illustrious academic career includes a prestigious French government scholarship, for which he pursued his research and teaching at Paris School of Economics. Sir has also been Agatha Harrison Memorial Fellow
at St. Anthony's College at the University of Oxford from 2007 to 2010. Dr. Chauhan has completed many research projects and has authored 15 books. He is an expert in development economics and economics of climate change. He has been honored with many national and international awards for his excellence in academic research. He has been a nominee to the Executive Council of Central University of Haryana and Kurukshetra University, Kurukshetra. He has been awarded with the Best Researcher Award for the year 2020 and 2021 by Kurukshetra University, Kurukshetra. He is the lead collaborator of Indo-Japan Joint Research Project. Dr. Chauhan is Bureau Member of Commission of History of International Relations. He has also been elected Member Secretary of International Studies Association. He has appeared on national and international TV channels like BBC and CNN for debates and panel discussions. Now, without much delay, let us welcome Dr. Pradeep Chauhan for sharing his insights with us. Dr. Chauhan. I think there is some issue with the sound. Hear me? Yeah. Organizers, please, can you hear me? Yes, sir, you are audible now. Okay, right. So, thank you very much. First of all, I would like to congratulate the organizer or what I was looking. It's a very interesting topic you have chosen for this seminar because you said that the seminar is on scientific innovation and technology. We will be discussing that today. Actually, these technology and innovation, how much important is, and but we will be talking about the leadership, global leadership. You will see that it is only the technology and the innovation which play the most important role for the leadership. So today we will share our views on, as you can see on screen, about this India's rising leadership in sharing global South climate change policies. Okay? So why we are discussing this, that this India's leadership is rising. Just I want to mention a few statistics about India, which will make you understand. First, total population share is almost 18%. 18% of the population of the world live in India. The important thing about that is, it is the youngest nation also. If you see the median age, it is 28.2 years. Whereas if you compare even with China, it is more than 35 years. If you go in the West or US, it's around 40 years. Meaning, those countries are becoming older. Where the Indian population is the youngest, world's youngest population we have, which we call a demographic dividend. And India is a country
It's a very large country of diversity. We have, you all know, the 28 states, 8 union territories, 400 big cities. So while we are talking about these states, even US has 50 states, that doesn't matter. But we have states like Uttar Pradesh, which have a population even more than, if you combine with United Kingdom, UK, France, and Germany, if you combine the population of all these three countries, Uttar Pradesh population is more than that. And there are many other states which are bigger than all these big countries you have heard, right? India's geographical area is seventh largest in the world. It is the fifth largest economy if you compare with the GDP, and likely to be third largest very soon. And in PPP, we are almost now second largest country on PPP, purchasing power parity. Students of economics might be knowing about this purchasing power parity. And India is the fastest growing economy for the last many years. Okay? And the important thing which I am saying, which made a difference when we compare with our emerging country like China, it is the largest democracy. I'm talking of our largest, I'm not saying the strongest. Okay, so within this backdrop, let's talk about the topic how India can play leadership role in at least in global south. Okay? So this Western model of development which we all are following. We were studying many models. Students of economics must be knowing the developmental models, starting from classical models, Harashaw's model, and all these models. Due to this Western model, today the world is, the whole globe, you can say, is at this stage of almost, in big trouble. Two trouble you can see just if you think about the whole scenario. One is the peace, the wars, and second is climate change. I think I consider climate change is really more dangerous because I'm talking about the war and peace because it is also it's not only a geopolitical problem, it's all related with the economic developments. So in that way, if you today see the governance of global south, we need a huge amount to cover up that damage which the Western world did for whole of the world. Okay? And now how they are preaching to the developing world that they should adopt these policy of renewable energy. And that's why I'm saying that the Western world creates sometimes the narratives. So developing world, the global south should be very careful when they create some narrative. Now the narrative is renewable energy, different kind of energy. Why it is that? Because the Western world know how to create those narrative, and they have all these multinational organizations starting from World Bank to IMF to different organization of United Nations, UNFCCC for the climate change, UNDP. So now no doubt there is a good thing when they talk about the renewable energy, about the carbon targets. But what is the motive behind that? They create the narrative and then they transfer the technology. That is the boost the Western. And we all follow. Even in India, we are following renewable energy, we are doing wonderful
wonderful job, but with the same methodology, same model, same technology of the West. We are not talking about our own way of life. So, okay, I come to this PPT, you see the realizing the principle of non-conditional. The Western world, whenever helps the developing world, okay, you, you should keep in mind that they are not there to help the developing world. Okay? They attack their sovereignty, they put conditionalities, and they just exploit these countries in that way. Okay? So for that, we must respect the sovereignty. India, which is emerging now a global power, playing its role, whether it is G20 or the BRICS or many other platforms, we should not follow the same type of leadership in the West follow. We should talk, our policy should be inclusive, and we should respect the sovereignty of the small nations. We should strengthen the South-South cooperation. We should not move toward, for everything toward the North. If India wants to, develop its relation, play the important role, it should look towards the African countries, Central Asian countries, Latin American countries, which are looking towards India, how they are looking. So, and the new leadership, global leaders, South leadership should also focus on climate finance without creating such kind of strings and conditions. Okay. Next PPT, please. Yeah. So, how Global South is playing a very, very, strategic role in the climate change policy. If you see the COP29, many people might be knowing about that after the Paris Agreement in 2015, there are these meetings of the Committee on the Paris 29, which recently held in Baku, and the COP30 going to held in Brazil. In the COP29 meeting, where these developing countries played a very important role, and you must have heard that for the last 3-4 decades, मैं थोड़ा बीच में हिंदी यूज करूँगा because students are there as they talked about that. तो पिछले 3-4 डेकेड से अगर आप 90s की पॉलिसी देखें तो उसमें साउथ और नॉर्थ हम जो वेस्ट है डेवलप्ड कंट्री है उसको बोलते हैं, साउथ जो डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहाँ बहुत बड़ा टकराव होता है. डेवलप्ड कंट्री यूज टू से कि developing countries should adopt such policies which save the environment friendly things. But the developing country under the leadership of India in all the meetings used to say that no, our objective is poverty removal, our objective is the development of the people. So the environment is the secondary thing for us. If the developed country wants that we should take care of the environment, they should compensate us for that, adopting the new technology, the coastal technology for the environment. The developed country should contribute for that. The developed country was not contributing anything. It will happen in 1990. Many such kind of agreements failed, like the Kyoto Protocol. It was discussed that okay, some funds should be created, but there was a deadlock of the countries between the north, west, and the south. Now, after this Paris Agreement, where India is the signatory of that of Paris Agreement, we agreed to cooperate with the north, and north also started slightly, we can say the ice is melting there also. Now they created this in COP29 one fund of
100 billion annual commitment for the loss and damages in the developing country. Although it's a very small amount, but they agreed it to enhance up to 300 billion up to 3035. And let's see in the next Brazil meeting what will happen. Next, please. So you see the leadership India is playing along with China also, because when we talk about the global south, China is not only the leader emerging in global south, but in the, you can say, whole globe, that leadership is emerging. But as I discussed in the UN for climate change and this Paris Agreement, G20, G77, and many other groups like Brazil, South Africa, India, China, made like the BRICS, India is playing important role. Next. But you see, even after the Paris Agreement, after the big claims of the whole West that they are very, very serious about this climate change policy, see their performance. 95% of the countries that signed the Paris Agreement have missed the UN deadline to submit new climate pledges for 2035. They agreed कि 2035 तक हम अपने टारगेट देंगे, उन पर काम करेंगे, but they missed it. See here, India is not among these 95% country. India is among the 5% country who have agreed or who made the climate pledges and who is meeting all the pledges even in advance. We will discuss it later. The serious problem is that about the climate change, that even if there is a lot of fuel cry for the renewable energy all over the world, but still 80% reliance is still on the fossil fuels. Fossil fuel, as you know, like the coal or the oil. So which create lot of pollution. And it is worth mentioning here that more than 80% of pollution is being contributed by the energy, use of energy. So if it will go like this, although you know the developed country, they are making plans that up to 2050 there will be a zero carbon. Mean we will use such kind of energy, there will be no pollution. India also fixed the target of 2070, zero carbon. But if we consider today what is happening in the world and we project it for this century, today we are talking about like the temperature is higher 1.5 degrees Celsius. By the end of the century, it will increase to 2.6 degrees. So you can understand what is happening all over the globe about this climate change. Even in a country like India, you can see the changes, what is happening in the mountains, what is happening about the weather change, and about the pollution. In recent reports, like among 10 most polluted cities of the world, 7 are from India. Delhi is the most polluted capital of the world. So this is the scenario today. So, but in the coming this Brazil COP30, let's see what the country will make the pledge. So, as I earlier discussed, this country in COP29 agreed that by 2035 we will contribute $3 billion for the climate finance. So. This is very important for the loss and damage. Sorry for the interruption. So, science and technology में 0.6% of GDP का. China 3 to 4% of GDP science and technology को देगा. कुछ developed country 5% जो है GDP का वो science and technology पर होता है. तो
अभी जो आपके सेमिनार का थीम मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है, जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हमें आज 3 चीजें डेवलपमेंट के लिए, 3 चीजें हमें कंट्री को आगे ले जाने के लिए चाहिए, तो वो 3 चीजें क्या है? 3 चीजें, फर्स्ट टेक्नोलॉजी है, सेकंड टेक्नोलॉजी है और थर्ड भी टेक्नोलॉजी। परंतु उसके लिए आपको आ, आ, जो जीडीपी का शेयर भी बढ़ाना होगा। आपको प्राइवेट सेक्टर, हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इसमें अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा है, उस कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इमिटेशन पर डिपेंड करता है, दूसरे कंट्री की टेक्नोलॉजी को सिर्फ अडेप्ट करता है। हम शुरू से ही हमारा प्राइवेट सेक्टर इसकी तरफ उसका ध्यान गया ही नहीं है, इनोवेशन की तरफ उन्होंने बात ही नहीं की। तो प्राइवेट सेक्टर को भी हमें इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा इनोवेशन यूएस में क्यों हो रही है, यूएस का जो एकेडमिया इंडस्ट्री का जो लिंकेज है, उनकी एट ए और हायर एजुकेशन और जो इंडस्ट्री है, उनका इतना क्लोज रिलेशन है कि वहां पर इनोवेशन होती है। भारत में ये बिल्कुल मिसिंग है कि हम इसकी प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल विमुख है, बिल्कुल जिम्मेदारी अपनी रोल लेने का। सरकार का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेना है, 0.6% से भी भारत नो डाउट नए कीर्तिमान बना रहा है। आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, दूसरी अदर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो दे आर डूइंग, बट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया व्हाट वी नीड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इस पीपीटी को हम कर सकते हैं। तो जब भारत और को अपनी लीडरशिप की बात करनी है, 2 चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो कलेक्टिव लीडरशिप जाना पड़ेगा। हमें वेस्ट की जो लीडरशिप देखी है, यूएस की लीडरशिप देखी, अब ऐसा ना हो कि चाइना एक उसी तरह की लीडरशिप देना शुरू कर दे। और वैसे भी चाइना टेक्नोलॉजिकली साइज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक लीडरशिप तो दे रहा है, परंतु चाइना की लीडरशिप पर लोगों को ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। देयर इज something intriguing in the leadership of China. You all know that it is not a very transparent economy, transparent country, as well as the वर्ल्ड के ग्लोबल साउथ के बहुत से कंट्री, यूएस से या वेस्टर्न लीडरशिप से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, they know that if they enter in their country for anything, they have something, they have some business to do, they will exploit their country and they will change the direction of the the development in that country, which is more beneficial for the West than those countries. चाइना के बारे में भी अभी डाउट है। चाइना के बारे में कि चाइना किसी कंट्री में जाता है तो वो उसका क्या क्या उसके मोटिव है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी लीडरशिप पर डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो ट्रस्ट करता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। उसमें हमें अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी, बिकॉज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड की है, परंतु डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हमें इस पूरे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को अगर हम टैकल प्रॉपरली करना चाहें तो हमें $2.2 ट्रिलियन हमें चाहिए। इसी तरीके से जो OECD की रिपोर्ट है 22 में जो पब्लिश हुई थी, उन्होंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज ने एक अच्छा काम किया है कि अपना $100 बिलियन का जो उनका गोल था क्लाइमेट फाइनेंस का, उसको सरपास करके 115
डॉलर कर दिया। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग, ग्लोबल साउथ इज emerging, is creating a multipolar world, so that is very important and India has a big role to play. Next please. So अभी हमारा जो माइंड सेट है वो सदा वेस्ट की तरफ जाता है, हम उनकी तरफ देखते हुए ज़्यादा कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बट वी शुड नाउ फोकस ऑन मोर साउथ साउथ कोऑपरेशन। इंडिया जैसे कंट्री ने चाइना ने तो लीड लिया, इंडिया हैज क्रिएटेड इट्स लीडरशिप इन मैनी एरियाज, तो वो साउथ साउथ कोऑपरेशन की हमें बात करनी है, ज़्यादा वेस्ट की तरफ नहीं देखना है। और जैसे भारत ने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था, उस अलायंस में 120 कंट्रीज ने मेंबरशिप ली, और आपने देखा है कि उसकी वजह भारत में सोलर जो पावर का ग्रोथ दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो इस तरह के एफर्ट अगर हम करेंगे, और अभी जो IS से जो टारगेट रख रहा है कि $1 ट्रिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे सोलर एनर्जी में। इसी तरह अमेज़न फंड ब्राजील ने क्रिएट किया है, और यू आर नो कि अमेज़न फॉरेस्ट जो ब्राजील में है, उन्हीं अमेज़न फॉरेस्ट में अगली COP30 की मीटिंग भी हो रही है, तो उसके डिफॉरेस्टेशन के लिए $1 बिलियन फिक्स किया है। तो बहुत सी रीजनल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी भी अलग अलग से बन रही है, चाहे वो अफ्रीका में है या दूसरे अलग इमर्जिंग वर्ल्ड में। नेक्स्ट प्लीज। तो अब हम बात करें बार बार रिन्यूएबल एनर्जी की, ग्रीन टेक्नोलॉजी की। पीछे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए सोलर विंड की हम काफ़ी बात कर चुके हैं, हाइड्रो पावर का बहुत स्कोप इंडिया में है, और इसी तरीके से जो EV की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से एफर्ट्स हम ग्रीन फिनेंस की बात पीछे आपने देखा बजट में की है, RBI की ग्रीन फाइनेंस की बात कर रहा है, तो काफी कुछ इस एरिया में हो रहा है। नेक्स्ट। तो मगर अभी भी देयर आर मेनी चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा कि डेवलपिंग कंट्री को अभी $2.2 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, अगर उसको ग्रीन इकोनॉमी जो रिजिलियंट हो, जो सस्टेनेबल हो, उसकी तरफ जाना है, और ट्रांजिशन जो रिन्यूएबल एनर्जी में प्रॉपर ट्रांजिशन हो, उसके लिए फंड चाहिएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बैरियर्स हमें चाहे वो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में हो या डेवलपिंग कंट्री टू डेवलपिंग कंट्री, चाइना है, इंडिया है, दे हैव टू शेयर नाउ their technology with the smaller country, otherwise the smaller country will again go towards the western country। इसी तरह से हमें डेट शेयरिंग, ग्रीन फाइनेंस की बात करनी चाहिए टू सपोर्ट दी क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट। So these again the same thing I am saying that the economic role of global south का एक बड़ा मर्ज हो रहा है, जिसमें उसने स्टार्ट भी किया है, और बिकॉज ग्लोबल साउथ में बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टोटल 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 6 बिलियन पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में रहती है। ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग वर्ल्ड, इमर्जिंग वर्ल्ड में रहती है। नेक्स्ट। So for that we need to we were discussing कि साउथ साउथ ट्रेड और डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसमें जो कुछ एफर्ट हुए भी हैं, जिसमें ग्लोबल सिस्टम फॉर ट्रेड प्रेफरेंसेस अमंग डेवलपिंग कंट्री की बात हुई है, क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपस में नॉलेज शेयरिंग के लिए, दैट हैज आल्सो डेवलप्ड। नेक्स्ट। कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन कि किस तरीके से इंडिया और ग्लोबल साउथ अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं, तो उसमें हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की बार बार बात कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्गर ग्लोबल कार्बन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, इस तरीके से कार्बन क्रेडिट की बात चल रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बड़े बदलाव की, रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि अभी तक वहाँ ग्लोबल साउथ की वॉइस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है,
तो उस तरह का एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इनमें करने की जरूरत है। नए इंस्टीट्यूशन भी बनाने की जरूरत है, जैसा ब्रिक्स ने पीछे थोड़ी सी बात की है। और एज यू नो कि ब्रिक्स ने कहा कि हम एक नई करेंसी भी बनाने की बात सोच सकते हैं। लोकल करेंसी में ट्रेडिंग की बात उन्होंने शुरू कर भी दी है। और जब ब्रिक्स ने कहा कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे तो आपने उस पर रिएक्शन ट्रंप का देखा होगा। ट्रंप ने एकदम कहा कि अगर डॉलर के मुकाबले कोई करेंसी लाएगा तो हम 150 टैरिफ उन कंट्रीज पर लगाएंगे। दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि डॉलर को चैलेंज मिलेगा, डी डॉलराइजेशन होगा जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह क्लाइमेट डेट स्वैप प्रोग्राम चलाने होंगे, स्मॉल कंट्रीज को हेल्प करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन जो बार बार हम बात कर रहे हैं इसको सब्सिडाइज करना होगा, ज़्यादा एलोकेशन करनी होगी। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। we need to focus on that, how it can be a smart, lot of credit flow should go for agriculture sector, or the innovation in the agriculture sector and technology in the agriculture sector. Next, इसी में कुछ और कि हमें जो हम बात कर भी रहे हैं कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें प्रडिक्शंस आज भी आप देखते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े बड़े डैमेज होते हैं, पर हम प्रडिक्शन नहीं कर पाते। तो प्रडिक्टिव मॉडल हमें डेवलप करने होंगे। हमें सभी सेक्टर्स में रिस्क असेसमेंट, एग्रीकल्चर में वेदर जो है वो 1 मिनट में आप देखें कि सारी जो फसल है उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर देता है। तो इट इज अ फेलियर ऑफ अवर जो साइंटिस्ट हैं जो इस काम में लगे हैं, वेदर प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे, हम उसमें रिस्क असेसमेंट नहीं कर पाते। तो इस तरह की डिजीज स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्रीकल्चर सेक्टर वो उसी तरह का वल्नरेबल सेक्टर रहेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को आप उस मुकाम पर नहीं ले जा पाएंगे। सिमिलरली हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज। बहुत कुछ असर हेल्थ पर पड़ रहा है, तो उसके लिए अभी हमारा सेक्टर तैयार नहीं है। जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देखिए हम दिल्ली की बात करते हैं, दूसरे सिटीज की बात करते हैं, अभी तो रिपोर्ट यही आई है कि इवन गोइंग टू द विलेजेस, अगर विलेजेस में भी देखें वहाँ पर भी लोगों के हेल्थ पर पॉल्यूशन का इतना बुरा असर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, होना शुरू हो गया है। दिल्ली की तो हम बात ही करें तो इट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग कि कितने बैड इफेक्ट यहाँ पर हो रहे हैं। और इसी तरह से हमें एजुकेशन में उसी तरह का बदलाव करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हम कंप्लीटली उसकी तरफ जाएं, जिससे बहुत बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक रोल प्ले करता है पोल्यूशन में। और जो हम ईवी की बात कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जब तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं होगा और इस तरह का लाइफस्टाइल जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे जहाँ पर मोटरेबल ट्रांसपोर्टेशन मिनिमलिस्ट हो। बहुत से कंट्रीज ने ऐसे एफर्ट्स किए हैं। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें, आप नीदरलैंड की बात करें, बहुत से ऐसे सिटीज है जहाँ पर मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम हो गया, लोग पीपल वॉक और पीपल गो बाय साइकिल। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। तो ये सारे चीज़ें कार्बन क्रेडिट की हम बात कर चुके हैं। तो ये अगर हम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम अपना ग्लोबल लीडरशिप, साउथ लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं। ये बात मैं दोबारा से वही रिपीट है कि इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी जब तक आप नहीं करेंगे, आप एक लीडर की जो रोल है वो प्रॉपरली प्ले नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको वही बातें जो पहले भी हमने की हैं
कि आपको एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ENP बढ़ाना होगा, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, एनर्जी ट्रांजिशन और EV ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह और इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम बात कर रहे हैं कि 25 में हम 20% तक करेंगे। इसके अलावा मैं अभी लास्ट वीक डॉक्टर रवीला बात कर रहे थे तो मैं शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस में था, हम वहाँ पर भी इस तरह की बात कर रहे थे ग्लोबल साउथ लीडरशिप की। तो वहाँ पर कई क्वेश्चंस वेस्टर्न ही लोगों ने किए कि although okay you are talking about this green climate change technologies, climate change transformation transition, but everything is dependent, everything is you are taking from the west. आप वही टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, आप उसी तरह का लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, but they have used that even the Indian और एक एक्सपर्ट ने तो कहा कि जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है वो तो हार्मनी विद नेचर है और गांधी जी ने बहुत इस पर बात की है। बहुत से हमारे जो इंडियन वे ऑफ लाइफ जिस तरीके से आप नेचर को पार्ट अपना समझ के you worship animal, you worship trees, you worship mountains, you worship river, तो वो लाइफ स्टाइल और इस ये जस्ट मेंशन कर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। Why you don't adopt your own way of life so that this you can save from this catastrophe of climate change in your country. So thank you very much. Thank you, sir. It was indeed an enriching experience to listen to your expert opinion on the theme of the seminar, that is sustainability and policies related to it followed worldwide. I hope all the attendees will have a plethora of insight and fresh perspective about the theme. Now it's time to honor our worthy resource person, Dr. Anish Dua. I invite Director Ma'am, Principal Ma'am, convener of the seminar, Dr. Anish Dua, please come on the stage. Dr. Chauhan, thank you so much. Are you connected with us or you want to leave? Hello? Yes, you are saying something to me? Yes, sir. We are thankful to you for your lecture. We just want to ask, you are connected with us or you want to leave? Yeah, anybody can ask me any questions. If there is any query, anybody want to ask something, he or she is welcome. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for the lecture. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Okay, sir. Now it's time to honor our worthy guest, Dr. Anish Dua. I can leave now. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. I welcome Mrs. Seema Sharma on the stage. Our resource person. We would like to honor Mrs. Seema Sharma also. Thank you, Dr. Anish Dua. Thank you, sir. It's time to honor Mrs. Seema Sharma now. Thank you, Seema ma'am, for spending your time and be with us today.
Ashok Kaur, my colleague, for further proceeding of the seminar. Good afternoon, everyone. I, Dr. Ashok Kaur, on behalf of GNG College, welcome you all in the valedictory session of the national seminar on the topic Scientific Innovations, Technology and Economic Interface for Sustainable Future in India. I think there is some delay. It's my pleasure to introduce today's distinguished speaker, Dr. Deepak Sharma, a renowned expert in the field of neurobiology. Dr. Sharma is a retired professor at the School of Life Sciences at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where he has made a significant contributions over his 40-year career. Dr. Sharma has spent 14 years in postdoctorate research and 26 years in teaching, shaping and minds of future researchers and scientists. He has been recognized for his work in brain aging, epilepsy and development, and has made an advancements in understanding the mechanism of anti-aging and the herbal product. Sir has published more than 100 research papers, chapters, reviews and abstracts in the reputed national and international journals. Dr. Sharma's research is supported by 15 completed projects funded by organizations such as CSIR, UGC and ICMR. Sir has also guided 15 MPhil and PhD students and mentored over 60 others. Dr. Sharma has been honored with prestigious awards including 3rd AGE Award by the International Congress in Mexico in 1989. Sir has published numerous books. Beyond his research, Dr. Sharma has played a very important role in various academic bodies and serving as a member of prestigious institutions. We are truly fortunate. Now, I would request Director Ma'am and Principal Ma'am to honor our resource person, Dr. Deepak Sharma. And I request convener of the seminar to please come on the dais. We are truly fortunate to have Dr. Sharma with us today. I am confident his lecture will provide the valuable insights. Without further ado, now I give mic to the sir. Thank you so much. Good afternoon to all of you. And thanks. And it is my privilege that I have been given an opportunity to come for second time to this college to share my views, whatever I have gained during the period of 45 years to GNU and the field of research. Now the topic of today. First of all, I should also congratulate
the organizing committee, and I am thankful to the organizing committee for organizing such a, brainstorming session, for organizing this type of seminars time to time. Our today's topic is the scientific approach and management for the sustainable future. We know that our mother nature is the best example of sustainability. अब ये सस्टेनेबिलिटी है क्या? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज को जीवित रखना, टू कीप एनीथिंग अलाइव। और जीवित रखके जिस तरह हम पशुओं को जीवित रखते हैं, उसमें से अपना भोजन भी लेते हैं और पशु भी जीवित रहते हैं, हमें अपनी मदर नेचर को भी इसी तरह वी हैव टू कीप अलाइव, हमें उसे जिंदा रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके, सदुपयोग कर सके, और वो हमसे सीखे कि उनकी आने वाली जनरेशन उसको, दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबिलिटी। और इसके अंदर तीन चीजें, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर there are three things. One is energy and another is matter. Am I audible to all of you? Energy keeps on changing, converting into matter, and matter keeps on converting into energy. ये एक रिसाइक्लिंग चलती रहती है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, और एनर्जी फिक्स, इस धरती के ऊपर, इस ब्रह्मांड में एनर्जी फिक्स, वो मैटर में कन्वर्ट होती है, हम, आप, जानवर, वनस्पति, ये मैटर, और यही मैटर जब डिके होता है तो ये एनर्जी कन्वर्ट होती है। जब एनर्जी अगर घटेगी तो मैटर बढ़ेगा, और मैटर अगर घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। और इस पूरे कन्वर्टिबल चक्कर को मेंटेन करने के लिए चाहिए प्रॉपर एनवायरनमेंट। मैटर को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में एक एनवायरनमेंट चाहिए, और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। अब इस एनवायरनमेंट को हमें मैनेज करना है कि हाउ टू मैनेज दिस एनवायरनमेंट टू कीप दिस साइकिल अलाइव। अगर ये एनर्जी और मैटर की साइकिल ये अलाइव रहेगी, हमारा नेचर सस्टेनेबल रहेगा, हमारा ब्रह्मांड सस्टेनेबल रहेगा। नाउ दो चीजें जो समझने वाली, मैं बहुत बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करूंगा। हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम विश्व गुरु कब नहीं थे? मैं ये जानना चाहता हूं विश्व गुरु कब नहीं थे? जब जीरो का आविष्कार हुआ तब भी हम विश्व गुरु थे, और आज भी विश्व गुरु हैं, तब भी हम डेवलप थे, और आज भी हम डेवलप्ड हैं, लेकिन हमारे ऊपर डेवलपिंग का ठप्पा लगा दिया, ताकि हम हमेशा नीचे सबऑर्डिनिज्म की तरह जीते रहे। ये ठप्पा लगाया गया है बाय ऑल अदर कंट्रीज। इसको इसी तरह रखो ताकि इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जिए, हमेशा हम हमेशा विश्व गुरु रहे। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें हैं, एक चीज है ग्रोथ और दूसरी चीज है डिफरेंशिएशन। अगर हमने अपने आप को ग्रो किया, चाइना ने भी ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद चाइना के अंदर क्या हुआ? वहां डेवलपमेंट हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफरेंशिएट किया अपने आप। उन्होंने हर पॉपुलेशन के अंदर जो पोटेंशियल था उसको इस्तेमाल किया, वो डिफरेंशिएशन था, तो वहां डेवलपमेंट। हमारे अंदर वो डिफरेंशिएशन खत्म रहा, तो हमने किया ही नहीं डिफरेंशिएशन। हमने इंक्लूसिवनेस को देखा है, डेफिनेशन टू मीट ओन नीड्स। हमें अपने आप को इतना सेल्फिश नहीं बनाना है कि हम फ्यूचर में आने वाली जनरेशन की नीड को पूरा ना कर सकें, उसे कहते हैं सस्टेनेबल। इसलिए हमें डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, ग्रोथ की तरफ नहीं। हम ग्रो करें, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की होगी, लेकिन ग्रो करें लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करें, तो इसलिए हम आज भी अंडर डेवलप माने जाते हैं और वो डेवलप माना जाता है। चाइना और हमारे के अंदर क्या फर्क है? इसकी पॉपुलेशन ऐसी है, हमारी भी ऐसी, वहां पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहां डेवलपमेंट है, हर घर के अंदर काम हो रहा है, हर हाथ के पास काम है, या बहुत सारे हाथ खाली घूम रहे हैं। So this is what the difference is। हम बात करते हैं चीजों की, इनोवेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीजों की
की हम बात करते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं करते कि उन चीजों को लाने के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस तरह से इनिशिएटिव होना चाहिए, किस तरह से हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। Now, focus on developing techniques to meet the current energy requirement without damaging the environment. हमने environment को damage नहीं करना है। अगर आपने 50 पेड़ काटे हैं तो आप 1000 पेड़ लगाइए। So that is the environment. Because environment, आज आप देखिए रिसर्च कहती है कि कैंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि आदमी की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो रही है, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है आप आदमी की ऑक्सीजन को डेफिशिएंट कर दीजिए, वो आवारा कुत्ते की तरह भागता फिरता है। इसी तरह से जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी की कमी हो जाती है और जो सेल्स ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और उनको अगर डेफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी वो आवारा हो जाएंगे, और आवारा होकर क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, दैट इज कॉजेस द कैंसर इन द बॉडी। सो आप ऑक्सीजनेटेड रहिए, पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहिए, आई डोंट थिंक यू विल सफर फ्रॉम, यू कैन इरेडिकेट दिस थिंग। तो ये बहुत सारी चीजें जो छोटी-छोटी चीजें जो हमको देखना है। एनी हाउ नाउ जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। हर आदमी के हाथ में काम होना चाहिए, हर आदमी के हाथ में रोजगार होना चाहिए, उसके हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, और एनवायरमेंटल स्टewardship होनी चाहिए, उसको एनवायरमेंट के प्रति उसकी जागरूकता होनी चाहिए, उसके कुछ प्रिंसिपल, उसके कुछ जो है वो ड्यूटीज होनी चाहिए, और सोशल इंक्लूजन दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर वर्ग के हर आदमी, हर बच्चे के हाथ में एक हुनर है। साइंस, न्यूरो साइंस ये कहती है कि हर बच्चा अपने साथ एक टैलेंट लेके आता है, लेकिन उसके टैलेंट को दबा दिया जाता है। अगर उस टैलेंट को हवा दी जाए और उसको प्रमोट किया जाए, naturally that talent will bring some new revenue। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोशल इंक्लूजन या बहुत जरूरी है, हमें हर वर्ग को साथ लेके चलना है अगर हमें उन देशों के साथ कम्पीट करना है तो। ना गोल हमारे सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत सारे हैं जिनके हम बड़ी जिक्र करते रहते हैं, हर आदमी आता है वो यही बताया जाता है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। किचन को साफ कोई नहीं करता, हर आदमी कहता है किचन में ऐसा होना चाहिए, किचन ऐसी होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, लेकिन साफ करने के लिए तो मेहनत लगती है, जहाँ काम करना पड़ेगा वहाँ आदमी पीछे हो जाता है। तो हम बातें बहुत कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, हर आदमी को जो है वो खाना मिलना चाहिए, हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जाके देख लो, हेल्थ में आप हॉस्पिटल जाते हो कि कितना आप रिलाई करते हैं चीजों के ऊपर। एजुकेशन के बारे में भी आप सब हम एकेडमिक के बाद काम पढ़ते हैं, तो आप चीजों को रियलाइज करिए, आप खुद रियलाइज करिए। दो चीजें, एक फेथ और एक बिलीफ। फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड, आप ब्लाइंडली फेथ करते हैं, लेकिन बिलीफ इज समथिंग व्हिच यू फर्स्ट यू सी प्रूव करते हैं पहले, तब आप जाकर के जब आप बाइंग हैंड एंड हेयर कर लेते हैं तब आप बिलीव करते हैं। तो डोंट बी इन फेथ, बिलीव करिए चीजों को। सो जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स, यस आज भी जेंडर इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, जबकि वुमेन्स दे आर डूइंग मच बेटर देन द मैन। आज भी बहुत अच्छा, एंड इन ऑल फील्ड्स, साइंस की फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है, एंड वुमेन कैन बी द बेस्ट साइंटिस्ट। आप ये देखिए कि जितना पोटेंशियल वुमेन के अंदर है, वो सारी जिंदगी आपके देश का खाना बनाती है और चुटकी से मसाले डालती है। आप लैब के अंदर खड़े होकर के और बैलेंस में नाप के डालते हो, तब नहीं आपके रिजल्ट ठीक आते और उसका स्वाद एक जैसा। शी कैन बी द बेस्ट साइंटिस्ट। उसका टेम्परामेंट देखिए आप, मल्टी फंक्शनल है, वो 70 चीजें दिन में सोचती है कि मेरे हस्बैंड को भी घर जाना है, वो ऑफिस जाना है, बच्चे को भी उन्हें भेजना है, खाना भी बनाना है, लंच में क्या बनेगा, कपड़े भी धोने, सो मेनी थिंग्स। आदमी को आप टैक्सी की तरह आदमी ले आओ तो वो डिलीवरी निकालता है। सो ये हकीकत है, जब आप जमीनी हकीकत को देखेंगे then you will find, you will realize कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस चीज की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऐसे नहीं होती। सो इसी तरह से हम वाटर और सैनिटेशन की बात करते हैं। अब वाटर और सैनिटेशन की बात करते हैं, अब आपने देख ही लिया होगा कि वाटर का क्या हाल है और सैनिटेशन का क्या हाल है। सो ये सब बातें करने से नहीं होता, दिस इज ऑल यू हैव टू डू। हर
इंसान को कम से कम अपने समाज और जहां वो रहता है अपनी जगह उसके लिए ईमानदार होना। You have to be fair enough कि मैं कितना ईमानदार हूँ वो होना पड़ेगा, अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन एज इट इज। हम हमेशा गुलामी में ही जीते रहेंगे और लोग हमारे ऊपर आके हंसते रहेंगे और वो हमारी वीडियो बना के बाहर दिखाते रहेंगे, इसी इंडिया इज बर्निंग, इंडिया इज पुअर, दिस एंड दैट, यही रहेगा और हम हमेशा इस चीज को हम जो है आत्मग्लानि को सहन करते रहेंगे। सो एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी, ये तीन चीजें जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी, हमारा सोशल कल्चर, हमारे आपस के अंदर एक दूसरे के साथ इंक्लूसिवनेस और हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें अच्छी होंगी देन ओनली द थिंग्स बिकम सस्टेनेबल। और हमें सोचना इसी तरफ है कि हमें इन चीजों को कैसे प्रमोट करना है। जब तक आप इन तीनों चीजों के लिए इफ यू विल नॉट बी fair enough for those things, we won't be able to make our environment sustainable. Now, economic growth and development, economic growth can be defined as market productivity from one period of time to another period of time. यानी पिछले साल हमारा जीडीपी क्या था और इस बार हमारा जीडीपी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। And what is the factors which determines the GDP? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, नेचुरल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना ये एक चीज, आइडेंटिफाई करके और उनको उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना, काम करना और उन पे इनोवेटिव वर्क करना वो दूसरी चीज। इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि आपके पास कितने लोग पढ़े लिखे और ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, कितने आपके ब्रेन्स हैं आपके पास, एंड आपका कैपिटल गुड्स क्या है, कितनी आपके पास संपदा है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपकी कितनी है। दैट इज द बेसिकली फैक्टर्स जो आपकी जीडीपी को डिसाइड करते हैं। नाउ जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज, स्किल, हेल्थ दैट पीपल इन्वेस्ट इन द एक्यूमुलेट थ्रू आउट देयर लाइफ। इतने सालों के अंदर हमने कितनी नॉलेज इकट्ठी की है, कितना स्किल इकट्ठा किया है, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल है। और आज की तारीख में अगर आप ह्यूमन कैपिटल की सच्चाई देखें तो जो आदमी 30-35 साल तक जिसने सर्व किया है कंट्री को, चाहे वो आईआईटी के लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद सड़क के ऊपर घूम रहे हैं, वो हमारा रिसोर्स है, वो रिसोर्स है। आने वाली जनरेशन को वो एक तरह से ऑक्सीजन है उसके लिए, लेकिन वो ऑक्सीजन एनर्जी अगर फ्री एनर्जी घूमती रहेगी सड़क के ऊपर तो वो क्या करेगी, वो रैंडमनेस क्रिएट करेगी, एंट्रोपी जनरेट करेगी, वही होगा। तो इसलिए ये हमारा जो कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, इसको पहचानना पड़ेगा और इसको यूज करना पड़ेगा। लिटरेसी रेशियो, परसेंटेज ऑफ पीपल टिपिकली एडल्ट 15 से उससे अबव जो कि लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उन लोगों को हमें एक पार्ट बनाना पड़ेगा हमारी डेवलपमेंट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज सर्विसेज, हमारा बिल्डिंग, हमारे ट्रांसपोर्ट, वाटर, पावर सप्लाई, ये सारी चीजें हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। ये मैं शर्मिंदा होता हूँ ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को बार बार रिपीट करने में, क्योंकि हर इंसान आकर के इसको रिपीट कर जाता है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। जब तक आप इसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक ये चीजें सफल नहीं हो सकती। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। नाउ हेल्थ एंड जनरल वेलफेयर। सो नाउ एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीजें आती है? एनवायरनमेंट में आती है बायोडायवर्सिटी। बहुत जरूरी है बायोडायवर्सिटी। अगर ये बायोडायवर्सिटी, सिर्फ इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्री इन द बायोडायवर्सिटी। हमारे पास भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के हमारे पास वेजिटेशन है, नाना प्रकार के हमारे पास जंगल है, नाना प्रकार के हमारे, वो क्या है, वो हमारे पास एक तरह का जीव पूल है। जिस बायोडायवर्सिटी को हम इस्तेमाल करके और नई नई क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के जंगलों के अंदर आपको पेड़ मिलेंगे जिसके अंदर कभी कीड़ा नहीं लगता, जिसके अंदर कभी किसी तरह की कोई जो है पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी
अच्छी होती है, उसके जीन्स को निकाल के आपने अपने डोमेस्टिक जो आपकी जो पैदावार है उसके अंदर उसको डालना है, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सकें। कि बायोडायवर्सिटी एनवायरनमेंट का एक वो पार्ट है जो कि उसका एक स्तंभ है। अगर बायोडायवर्सिटी खत्म होगी, यानी मतलब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंगल्स, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। सो स्पेशल सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर 29-30 स्टेट है। हर स्टेट के अंदर आप जाइए, आपको डिफरेंट कल्चर मिलेंगे। 50 किलोमीटर की दूरी में जाने के बाद आपको कल्चर और लैंग्वेज बदलती हुई मिलेगी। सो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, एक रिसोर्स है। एंड क्लाइमेट एंड वेदर, सॉइल एंड वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे एनवायरनमेंट के ही पार्ट है। हमें खुद इन चीजों को, अगर आज से हर इंसान अपने घर के गार्बेज को डिवाइड करने लग जाए डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल ईमानदारी से, हर इंसान को ईमानदार होना पड़ेगा। अगर एक इकाई ईमानदार होगी तो 140 करोड़ लोग ईमानदार, ये आपको सिखाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड यही एक इनोवेशन करने के लिए यही पहला स्टेप है, अदरवाइज आप इनोवेशन नहीं कर सकते। सो नाउ एनवायरनमेंट हैज अ बियरिंग कैपेसिटी। हर एनवायरनमेंट के पास एक कैपेसिटी है जिसके अंदर वो किसी भी पॉपुलेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। वो एनवायरनमेंट लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग भूखे रहेंगे क्योंकि इतना अनाज नहीं मिलेगा उनको। तो हर एनवायरनमेंट की एक बियरिंग कैपेसिटी है। अब अगर वो पॉपुलेशन सस्टेनेबल है और रिन्यू होता है तो ये एनवायरनमेंट की बियरिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर पॉपुलेशन सर्वाइव कर सके, सस्टेनेबल बनाए। तो एनवायरनमेंट की बियरिंग कैपेसिटी का अगर आपने रेंज बढ़ा दी तो ठीक है, एनवायरनमेंट कैन अकोमोडेट मोर एंड मोर। सो दैट इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इसी तरह से टॉलरेंस रेंज है एनवायरनमेंट। एक स्टेज के बाद एनवायरनमेंट लचर होने लग जाता है। वही हो रहा है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बियरिंग, ये जो कैपेसिटी है लोगों की, ये आउट ऑफ रेंज जा रही है। हम लोग हाथ तो बढ़ रहे हैं और मुंह भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हर हाथ में काम नहीं आ रहा। तो ये जो टॉलरेंस है रेंज, ये हमारी उतनी ही है, और ये टॉलरेंस रेंज से बाहर हो गए। तो इसीलिए हमारे को ये सारी चीजें हमें सोच देखनी पड़ रही है कि यहाँ पर पॉवर्टी है, ये है, और लोग बाग जाके मजाक उड़ाते हैं इसका हमारे। सो these are the things which we have to take care of. And threshold capacity, एक स्टेज थ्रेशोल्ड कहते हैं मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बियर ए पॉपुलेशन। अगर उससे ऊपर निकल जाए थ्रेशोल्ड से तो कोई भी सिस्टम डैमेज हो जाता है। सो ये तीनों चीजें एनवायरनमेंट के अंदर बहुत जरूरी है, जिनको हमें ध्यान में रखना है। एंड द फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, हमारे सप्लाई रिसोर्सेज, कौन कौन सी, कहां से हमारे पास खाद्यान्न आ रहा है, कहां से हमारे पास बिजली आ रही है, कहां से हमारे पास चीजें आ रही है, उन रिसोर्सेज को हमें ध्यान में रखना है। सो those resources are basically we have to improve those resources and then waste absorb capacity। ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये कितना वेस्ट निकाल रही है और कितना ये एब्जॉर्ब कर सकती है, ये एनवायरनमेंट कितना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, इसकी भी एक कैपेसिटी है। तो इसीलिए ये बनाया गया कि भाई बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, इसको अलग अलग करिए, ताकि नॉन डिग्रेडेबल जो है उसको हम रिसाइकिल करके कुछ बना सकें, और जो डिग्रेडेबल है उसको हम खाद के रूप में तैयार कर सकें। दिस इज ए इनोवेशन। सो लाइफ सस्टेनिंग कैपेसिटी एंड एस्थेटिक सर्विसेज, ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बियरिंग कैपेसिटी, टॉलरेंस रेंज और थ्रेशोल्ड कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। नाउ एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज, वही जैसे ग्लोबल वार्मिंग का बात करते हैं, ओजोन डिप्लीट होता जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता जा रहा है, देन
वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी तरह से वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें हैं जिसको कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हमें डेवलप अपने आप को पहचाना है तो मैं डेवलप, लेकिन ये चीजें अभी भी हमारे जो है क्वेश्चन मार्क। सो स्ट्रेटेजीज फॉर ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 3 स्ट्रेटेजीज होनी जरूरी है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम इनोवेशन की बात करते हैं, जिस इंसान के पास मेंटल हेल्थ नहीं है उसके पास इनोवेशन का कोई आइडिया नहीं, जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसके पास इनोवेशन का कोई आइडिया नहीं। एजुकेशन किताबों की एजुकेशन नहीं, एजुकेशन एक्सपीरियंस से क्या है। सो experiment experiential education, science is the important tool for experiential education। आपको बचपन के अंदर जब आप 5वीं 6वीं क्लास में होते हैं तब से आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाता है और आपको एक बैटरी, एक सेल और एक बल्ब और वायर दे दिया जाता है कि इस बल्ब को जलाइए। आप पूरी कोशिश करते हैं, 2 दफा 3 दफा फेलियर, 4 दफा फेलियर, और 5वीं दफा जब वो बल्ब जलता है तो यू एंजॉय द थिंग्स, आप एंजॉय करते हैं। सो ये एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। तो एक साइंटिस्ट बैठ करके और 20 साल से रिसर्च कर रहा है लैब के अंदर, उसको अगर खेत में खड़ा कर दिया जाए, उससे कहा जाए कि ये बताओ कि ये जो हवा चल रही है इसका क्या इफेक्ट होगा हमारी फसल पे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो किसान 30 साल से 20 साल से वहां किसानी कर रहा है वो फट बता देगा कि ये हवा चली है, अब फूल निकलेगी, अब बोर निकलेगी, अब आम लगेगा, अब ये होगा। दैट इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, वो है एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। और उस इंसान को हमें इंक्लूड अपने सिस्टम के अंदर लेना पड़ेगा ताकि वो हमें बताए कि भाई आपने इस एक्सपीरियंस से कैसे जान लिया ये बात। मैं तो लैब के अंदर बैठ करके 20 साल से उगा रहा हूँ इसके डबले के अंदर, मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है? वो एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। और मेंटल हेल्थ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, दिमागी तौर पे आप स्वस्थ हैं, तभी आप एक स्वस्थ इनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमागी तौर पे आप कमजोर हैं तो आप इनोवेटिव नहीं हो सकते, आपका इनोवेशन नेगेटिव होगा या फेलियर होगा। इनोवेशन वो होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए काम आए, ना कि सोसाइटी को डिग्रेड करने के लिए काम आए। दैट्स द इनोवेशन। तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और हेल्दी एंड इनोवेटिव माइंड्स होने चाहिए। इनोवेटिव माइंड्स होने चाहिए। माइंड और ब्रेन में डिफरेंस है, क्योंकि ब्रेन एक वो ऑर्गन है जो आपकी बॉडी के अंदर है और माइंड एक वो एनर्जी है जो बॉडी से बाहर है। माइंड इज ए बेसिकली द इंटरेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर आपका ब्रेन कैसे इंटरेक्ट करता है तो उसको माइंड कहते हैं। आप फुटबॉल खेलने का माइंड बनाते हैं, आप पिक्चर देखने का माइंड बनाते हैं, आप बैडमिंटन खेलने का ब्रेन नहीं बनाते कि मैंने आज मेरा ब्रेन बन रहा है मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। नो, आप कहते हैं मेरा माइंड बन रहा है। तो माइंड क्यों बन रहा है? क्योंकि आपके 4 दोस्तों ने आपसे कहा चलिए यार बहुत अच्छी पिक्चर लगी, हम देखेंगे, तो उन्होंने माइंड बनाया, आपका ब्रेन नहीं बनाया। तो ब्रेन और माइंड के अंदर डिफरेंस है। तो इसलिए आपका ब्रेन, आपका माइंड इनोवेटिव होना चाहिए कि आप हमेशा ये सोचें कि मुझको इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करना है। जब आपका जो माइंड सेट है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का होगा। साइंस का स्टूडेंट हमेशा अलग अलग एंगल में बात करूंगा, अलग अलग एंगल से चीजों को सोचता है। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब आपका माइंड ठीक होगा तभी आप एक सक्सेसफुल रिसर्च कर सकते हो। आप सोच सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो रिसोर्सेज को हम किस तरह से ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पहला प्रिंसिपल होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ के लिए हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हैं। रिसर्च कोई शब्द नहीं है, दैट इज ए रीडेफिनेशन ऑफ व्हाट ऑलरेडी हैज बीन सर्च्ड। सो to identify the technologies and industries in which country or firm has the largest growth potential and challenge the resources to
to them. Domestic intellectual property protection. So हमारे पास जो चीज है, जो हमने रिफाइनमेंट की है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हमारे पास राइट होना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाहर वाले ले लें। ये हुआ है, पहले भी हुआ है। अंग्रेजों ने 200 साल यहाँ पर राज किया। क्या चीज? हमारे यहाँ आयुर्वेद भी था, हमारे यहाँ होम्योपैथ भी था, लेकिन उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास रिसोर्सेज थे। 200 साल में करा क्या? सब कुछ ले गए, वहां टेक्नोलॉजी लगाई, आज वही चीजें हमें बेच रहे हैं। एक नीम के पेड़ में से 20 उसके फंक्शनल ग्रुप निकालते हैं और हमारे पास वो बेचते हैं डॉलर्स में। तो उनके पास टेक्नोलॉजी, हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग करना है। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत, तो टेक्नोलॉजी हमें सीखनी है, इनोवेशन करना है और उन चीजों को हमें अपने ही देश के अंदर उसको नया आयाम देना है। दैट शुड बी द मोटिव। नाउ रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर हमारे पास इस तरह की संपदा है कि हम 4-5 सीजन का जो है वो जलवायु परिवर्तन होता है। हिंदुस्तान का आदमी इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है, इतना ज्यादा इम्यून हो चुका है, उसको अगर किसी भी कंट्री में भेज दिया जाए तो वहां पे वो सस्टेन करेगा। क्यों? क्योंकि ही बिकम्स यूज्ड टू फॉर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। वो हर एनवायरनमेंट में रह सकता है। तो हर एनवायरनमेंट के लिए उसको अपने एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा कि हमारे किस एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह के रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। देन एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट का सत्यानाश ह्यूमन इंटरवेंशन ने किया। आज की तारीख में अगर आप देखें तो हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? हम एनवायरनमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं मनी। क्यों? पहले भी तो हमारी जमीन बंजर थी, हमने उसको उपजाऊ बनाया। आज आप बंजर जमीन के अंदर रियल एस्टेट और मल्टी स्टोरी खड़ी कर रहे हैं, क्यों नहीं बना सकते उसको आप दोबारा से उपजाओ? ये एंथ्रोपोजेनिक है। आप क्यों काट रहे हैं पेड़ों को निकालने के लिए? आप रास्ते नहीं बदल सकते, आप रास्ते ही बदल सकते, लेकिन नहीं, रास्ता वहीं से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो 50 पेड़ रास्ते में आ रहे हैं और जो ये रियलाइज नहीं होना, हर 10 साल में साइंस अपने आप को बदलती। पहले पेजर आए, फिर धीरे धीरे मोबाइल आए, फिर आज स्मार्टफोन आए। पहले बड़ी फ्लॉपी चलती थी, फिर छोटी डिस्केट आई, फिर उसके बाद पेन ड्राइव आई, आज चिप्स आ गई। साइंस बदलती और साइंस के बदलने की वजह से क्या होता है? साइंस की बदलने की वजह से हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ एडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। आज रिक्शे वाला भी सीख गया स्मार्टफोन चलाना, और एक टाइम था जब हम ये कहते थे कि हिंदुस्तान इलिटरेट। कहाँ इलिटरेट है? आप जरा देखो, रिक्शे वाला कहता है सर 100 रुपये, आप उसको 50 रुपये ट्रांसफर कर दो, फट पकड़ लेगा आपको। सर तो 100 नहीं आए, 50 आए। जानता है ना सारी चीज, आप मैसेज करके देखो, आपको फट रिप्लाई देगा। तो क्या हुआ? साइंस ने हमारे विज्ञान को बदला। साइंस एक ऐसा हमारे पास टूल है जो इनोवेशन को जन्म देता है। साइंस का स्टूडेंट हमेशा इनोवेटिव होता है अगर किसी आपको अपनी कमियों का एहसास हो। सो साइंस बेसिकली एंड साइंस हैज ए बिगर विजन। जब आप एक चीज करते हैं कि आपने एक बल्ब जला लिया, तो आपके दिमाग में आता है क्या मैं 2 नहीं जला सकता, क्या मैं 3 नहीं जला सकता, क्या मैं 10 नहीं जला सकता। और जब आप 10 को लगाते हैं लाइन में, तो आप देखते हैं यार इसकी रोशनी कम है, अब क्या होगा? फिर आपका दिमाग काम करता है, यार इसकी रोशनी कम हो गई, इसको कैसे बढ़ाया जाए? तो क्या आपका क्रिएटिव ब्रेन, ट्रेन्ड ब्रेन, और आप बैठते हैं 2-3 लोगों के साथ, यार ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, और ये जो है रोशनी कम होगी बल्बों की, मैंने 10 ट्रेन लगभग लगा दिए, 10 बल्ब। तो उसी ट्रेन ब्रेन के अंदर आइडिया आता है, ये है, ये बेसिक चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इन छोटी छोटी चीजों को आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इनोवेशन क्या है? आज आदमी जो अनपढ़ और एक्सपीरियंशियल है, बहुत सारे गाँव में चले जाओ, जुगाड़ करके बैठा है, उसने जो है वो पानी निकालने वाले ट्रैक्टर बना दिया, खेत जोत दिया। ये इनोवेशन है कि नहीं है? लेकिन वो एक्सपीरियंस है।
लेकिन उसकी कदर नहीं, उसको हम नहीं मानते। हम उसी को साइंटिस्ट मानते हैं जो लैब में बैठा है और 20 करोड़ की ग्रांट लिए बैठा है, वो ही इज द साइंटिस्ट। ये व्हाटएवर ही विल से वो सच। अगर एक अनपढ़ इंसान सड़क पर पड़ा हुए बम को ये कह दे कि ये बम है, तो कहेगा पागल है, बम कैसे हो सकता है? और वही है नासा का साइंटिस्ट आके खाली माचिस पड़ी है, उसे कहते हैं इसमें बम है, सारे भाग जाएंगे स्कूल से, क्योंकि उसने वो ट्रस्ट पब्लिक के अंदर गेन करी और वो नहीं करता। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग, चीजों को समझने की क्षमता जितनी साइंटिफिक ब्रेन के अंदर है वो दूसरे के अंदर नहीं। साइंस का स्टूडेंट अगर 12th क्लास तक उसने साइंस पढ़ रखी है और उसको खुदा ना खास्ता नहीं मिली साइंस, तो कॉमर्स भी ले सकता है, कॉमर्स भी एक्सेल कर जाएगा, वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट लगा है। लेकिन अगर हिस्ट्री वाले को कह दिया जाए कि जरा केमिस्ट्री पढ़ ले या बायोलॉजी पढ़ ले, वो नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ ही नहीं सकता, सारी जिंदगी फेल करेगा। सो इंटरप्रिटेशन कैपेबिलिटी साइंस के स्टूडेंट के पास, वो चीजों को इंटरप्रेट कर सकता है कि अगर ऐसे ऐसे हुआ तो क्या हो सकता है, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है। और यही सब चीजें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर कॉन्शियसनेस का चेतना, और ये चेतना जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हाउ मच यू आर कॉन्शियस about your environment, that is the consciousness, or consciousness is a function of brain. आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन निकाल दिया जाए तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, लेकिन अगर बॉडी सारी की सारी आपकी पैरालिटिक हो जाए और ब्रेन जिंदा रहे तो आप काम कर सकते हैं। इसकी फिल्म्स को आपको सिखाऊं, इसलिए ब्रेन मैटर्स, बॉडी डजंट मैटर। बॉडी के अंदर अगर कुछ भी होता है, वन शुड नेवर बी, मतलब उसको कभी इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर कुछ कमी है। ब्रेन ऑलवेज एट द टॉप एंड कीप इट। ये कैसे होगा ये भी आगे बात करेंगे। नाउ साइंस कीप्स ऑन चेंजिंग, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव ब्रेन पावर एंड मेंटल हेल्थ। हमेशा नई नई इनोवेशंस होती हैं, नए नए साइंटिफिक आयाम आते हैं और हर इंसान उस नई चीज को समझने की और करने की कोशिश करता है, उसका ब्रेन डेवलप होता है। ब्रेन के अंदर नए नए कनेक्शन, नए नए सर्किट बनते हैं और इसका ब्रेन जो है वो डेवलप करता है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोज ऑन। मेंटल हेल्थ इज स्टेट ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अभी आप यहाँ बैठे सुन रहे हैं, बाहर निकलते ही आपने चापड़ा मार दिया। That is not a mental health, that is an event. So, mental health is a mind characterized by emotional well-being, good behavior, adjustment, related to freedom from anxiety, and the discipline symptoms, and a capacity to establish constructive relationships and cope with the ordinary demand and stresses of life. जिंदगी के अंदर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जिंदगी में हमारे और उन टॉक्सिक वर्ड्स को हमने नहीं, हम बात का स्ट्रेस है, किस बात की टेंशन है? मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं ये सवाल नहीं कर पा रहा। पागल नहीं कर पा रहा तो तेरे विल पावर की कमी है। तेरी टेंशन इस वजह से टेंशन नहीं है, इस वजह से है कि तेरी विल पावर कमजोर है। तूने हाथ उठा लिया और तू कह रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा। ये विल पावर है। अगर बच्चे की विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो उसके जबान के ऊपर ये दो शब्द नहीं आने चाहिए, स्ट्रेस और टेंशन। अब यहाँ घर पे भी माता पिता कहते हैं मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, सुबह क्लास में मैं बड़ी टेंशन में हूँ, कैसे क्या करूँ? तो बच्चा सीख लेता है। वो भी फिर थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं मम्मी आज तो बहुत फोन करती है, मैं बड़ा टेंशन में हूँ। अब उससे पूछ लो बेटा टेंशन होती क्या है, उसे पता नहीं टेंशन क्या हो। बस उसने सीख लिया कि ऐसे मौके पे ये शब्द बोला जाता है और उससे टेंशन जैसे मम्मी बोलती है पापा रसोई में होती है,
तो मैं भी टेंशन बोलूंगा तो मेरा टेंशन उठेगा। सो ये चीजें, these are the toxic words. We should not use these words in front of our children or in our family. स्ट्रेस क्या है? अगर कोई कहता है स्ट्रेस है, इसे तो चिंता और तुम you are unable to do this thing. आपने हथियार डाल दिए, do it again and again. लेकिन साइंस का स्टूडेंट हमेशा अगर एक दफा फेल होता है तो दूसरी दफा करता है, तीसरी दफा करता है, चौथी दफा उसके विल पावर के टेस्ट होंगे, क्योंकि उसको पता है one day I will get it. So why mental health is important for innovation? Having good mental health takes life easier, and it helps us calm, comfort ourselves when we are upset, to cope with the loss with other people. ये सोशल आपका जो लोगों के साथ कांटेक्ट, जिंदगी में एक चीज याद रखिए, अगर किसी के साथ आपका मन मुटाव है किसी एक इशू पे, तो 100 में से 99% अपने दरवाजे ओपन रखिए, उस एक इशू की वजह से अपने पूरे 100% दरवाजे मत बंद करिए, क्योंकि हो सकता है कि 99% अगर दरवाजे खुले हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसी इंसान से कोई ना कोई बेनिफिट लेना पड़ जाए। तो क्या है, यार उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं बात ही नहीं करता, उसके घर जाना ही नहीं, उसको हेलो हाई नहीं करनी, फलाना नहीं करना, आपने 100% दरवाजे बंद कर। और मान लिया कल को वो जो है वो किसी ऐसी पोजीशन पे आ गए, तब आपको इससे खबर भी लेना। 99% आप खुले रहिए, उस एक इशू के ऊपर आप उससे बात करें। आई डोंट वांट टू टॉक ऑन वन इशू बिकॉज मेरी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी मिलती नहीं, इसलिए आई बेटर वी शुड नॉट टॉक। 99% चीजों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, तो दैट शुड बी डन। सो कहने का मतलब ये है कि ये है हमें समाज में किस तरह से चलना है। पढ़ाई का मतलब ये किताबें पढ़ना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है कि आपने अपने जीवन को कैसे टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, हेल्दी माइंड, सोशल इंक्लूसिवनेस सबके साथ, यानी आपको देख करके 4 आदमी ये कहेंगे नहीं यार इससे बात करते हैं, ना कि ऐसा हो कि आप 5 लोग बात कर रहे हो, छठा आ रहा है वो आगे आ गया, चलो चलो चलो, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। होता है, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी हमने भी देखा है कि हम 4 दोस्त बात करते हैं, 5वां जो अभी कल लड़के क्या था जब वो आता है तो थोड़े यार इससे क्या बात है, तब बाहर जाते हैं। तो आपका वो नेचर होना चाहिए कि जहां आप खड़े हो वहां पर आप एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाते हैं। हार्मोनियस एनवायरनमेंट, आप अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, भाई बहन के साथ बैठते हैं, योर एनवायरनमेंट शुड बी हार्मोनियस, क्योंकि उनके आपके ग्रैंडफादर के पास जो एक्सपीरियंस है आपके फादर के पास नहीं है, आपके फादर के पास जो एक्सपीरियंस है आपके ब्रदर के पास नहीं है, और जो एक्सपीरियंस आपके पास है वो आपके ग्रैंडफादर के पास नहीं है। क्योंकि आप एक बटन दबा करके 1 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आपके ग्रैंडफादर जो है वो बेटा मत कर, पता नहीं 1 किलो फालतू रुपये कहां चले जाएंगे, मेरा तो बैंक में वो कॉन्फिडेंस वहां नहीं। एवरीबॉडी हैज सम टैलेंट, और इसीलिए हमारा कल्चर था कि कुछ भी हो पूरे परिवार के सदस्यों को बैठ करके एक टेबल पे एक टाइम खाना खाना है, ताकि उस पर बैठ करके हम सब लोग अपने अपने दिन सारे दिन की दिनचर्या को डिस्कस कर सकें और हम बता सकें, एक दूसरे से हम रूबरू हो सके, एक दूसरे को जान सकें, एक्सपीरियंस ले सकें। दैट इज द बेटर हेल्थ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरह के सोशल एनवायरनमेंट के अंदर रहना चाहिए जो हार्मोनियस हो। दैट शुड नॉट बी quarrelsome। किसी के प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या जब आप करते हैं तो क्या होता है, जिसके प्रति आप कर रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपके अंदर वो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, वो टॉक्सिन जनरेट हो रहे हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर टेंशन और स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं आप, यू आर लूजिंग योर बॉडी। वो कहती है टेंशन देके चला गया, अब आप टेंशन में घूम रहे हैं। तो जनरेशन हो आपको समझना चाहिए हर चीज गतिमान है, घूम रही है, जो है वो निकलता है और
तो आप ये देखते कि आप सड़क टूटी हुई आ गई तो आप क्या सोचते हैं, एक भी लोग पास करेगा, फिर आगे फिर अच्छी सड़क आ जाती है, फिर आप चलते हो, फिर गड्ढे वाली आ जाती है, फिर आप चलते हो। जब वहां आप ये सोच सकते हो कि इट विल ऑल्सो पास, तो जब आपके जीवन में बुरा वक्त आता है तो आप क्यों नहीं सोचते कि इट विल ऑल्सो पास? तब आप हड़बड़ा जाते हैं, अरे इट विल ऑल्सो पास, ये भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको पता लगाना है, जैसे सोलर हमने पता कर लिया कि सोलर की एक एनर्जी का सोर्स है, विंड की एक सोर्स है। इस तरह से बहुत सारी नॉन कन्वेंशनल जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास है, सोलर एनर्जी है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट्री के अंदर आज हम जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम ऐसे सीड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं जिसको हम आगे चल के दोबारा से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हेल्दी सीड्स। सो इसी तरह से विंड एनर्जी, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, एफिशिएंट वाटर फिक्सचर की बात करते हैं, ग्रीन वाटर फिक्सचर्स। आजकल सेंसर वाले मिल के आ गए, पहले आप बोल के खड़े हो जाते थे, पानी बहता रहता था, आज आप बोले तो आपका इसी तरह से लाइट आ गई है, कमरे में घुसोगे तो लाइट जलेगी वरना नहीं जलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इनोवेट की है, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए आपकी बॉडी में उतनी हेल्दी होनी चाहिए ताकि आपका ब्रेन हेल्दी। Now these are all different types of resources which we have found out and we are using to explore करने की कोशिश कर रहे हैं। Now challenges to sustainable development, सबसे बड़ी बात क्या है हमारे देश के अंदर? सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्या है? एक सरकार आई, हमारी फॉरेन पॉलिसी, और उस फॉरेन पॉलिसी में दूसरी आई तो दूसरी फॉरेन पॉलिसी खत्म, फिर तीसरी आई तो फिर हमारी वो पहली वाली फॉरेन पॉलिसी खत्म। हम कभी भी ये मान के नहीं चलते कि जो चीज पीछे चल रही थी उसी को हम ज्यादा बंद करो, हम अपने ढंग से करें। अब हर इंसान आकर के अगर लाइन पीछे लगेगा तो लाइन कभी लंबी नहीं होगी। टाटा बिरला और ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये ऐसे ही नहीं बने, हर जनरेशन ने ऐड किया है, हर जनरेशन ने ऐड किया है, तब जाकर के ये यहाँ हर जनरेशन खत्म कर देती है सब कुछ, ये सड़क पे आ जाए। तो दिस इज हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको हमें ठीक करना है। और इंस्टेबिलिटी क्या है कि जो कार्यक्रम एक शुरू किए गए उन कार्यक्रमों को सिरे लगाए। अगर हो सकता है कि पिछली सरकार के पास इतने रिसोर्सेज ना हो या वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी ना डेवलप हो या उनका ब्रेन इतना विकसित ना हो, लेकिन आपका ब्रेन तो विकसित हुआ, उसी लाइन को और लंबा कीजिए, तभी होगी डेवलपमेंट। अब आपने आके लाइन को मिटा दिया, आप नहीं खींच रहे, जब तक आपने उतनी लाइन खींची इतने में आप आपके विदेशों के साथ कैसे संपर्क है वो डिपेंड करना है। सो पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस बेसिक रिसोर्सेज लाइक वाटर, फूड एंड हेल्थ, ये सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हम बात क्या करते हैं? हम बात करते हैं कि नौकरी मिल जाए, कोई नौकरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए नौकरी। अब जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं आप इंडस्ट्री लगा दीजिए। हमारा देश आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा उस वक्त दिया जाता तो जितने भी आज साइंटिस्ट या जितने भी बॉटनी से और इससे साइंस से करके जो घूम रहे हैं, आप उनको दे दो 1-1 एकड़ जमीन, 5000 एकड़ जमीन लेकर 1 एकड़ दे दो और तो मैं आप इसके अंदर ये लगाओ, करो, लेट अस सी व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, उसको उगाएगा। लेकिन वो इंडस्ट्री तो नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि इनके ऊपर गौर, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारी डायरेक्शन, हमारी नियत उस चीज को करने की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर ये लोग रहेंगे और ये ब्रेन सेट रहेगा तभी हम तब्दील की गाड़ी हो सकते हैं, और अगर ये ब्रेन सेट नहीं रहेगा तो हम दूसरे करेंगे। सो देन क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी लेवल, नेचुरल डिजास्टर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, these are all problems जिसको हम बार बार लाते रहते हैं और बोलते रहते हैं, लेकिन करने के
हेल्दी ब्रेन, एक हेल्दी माइंड और आपकी सोच आपकी तभी आप किसी चीज को कर सकते हैं। अगर आप किसी भी काम को लेते हैं हाथ में और आप उसके प्रति ईमानदार हैं तो वो चीज सक्सेसफुल होगी, वरना नहीं होगी। अदरवाइज यू विल ऑलवेज लिव अंडर द इंप्रेशन ऑफ स्ट्रेस एंड tension. Now, strategies for sustainable development हमें non-conventional resources को लेना है, GNGCollege को यूज करना है, wind और solar power को यूज करना है, traditional knowledge को प्रैक्टिस करना है। ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास मैंने पहले बताया, बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पास, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी हमें किसी तरह से, अगर टेक्नोलॉजी के अंदर हम अगर एक्सेल कर जाएं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा कि हमारा देश इस वक्त देखा जाए तो बायोडायवर्सिटी के अंदर सबसे आगे है, और बायोडायवर्सिटी के अंदर से ही ये सारी चीजें निकलती है ट्रेडिशनल नॉलेज। सो बायो कंपोजिंग, बायो पेस्ट कंट्रोल, ऑल दीस थिंग्स वी हैव टू टेक केयर। नाउ इन सब चीजों को देखते हुए हमारी नेशनल न्यू एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेम, लेकिन transform India into a vibrant knowledge society, विचार बहुत अच्छे हैं, and global knowledge superpower, broad-based, flexible, multidisciplinary education system। इसके बारे में बोलूँगा कुछ नहीं, आप अपने अंदर मन से और अपने दिल से इसका जवाब दें। Bringing out the unique capability of each student, unique capability को आप हर स्टूडेंट के अंदर से बाहर निकाल पाते हैं। Promote critical thinking rather than learning focus on scientific temperament। Critical thinking हम कितनी कर पा रहे हैं? Remote learning की बात, remote learning। पॉलिसी फॉर 21st सेंचुरी इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। कितने लोग आत्मनिर्भर हो? हर इंसान एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये हटे तो मैं बैठ, तो जब तक ये मानसिकता रहेगी, ये शब्द कागजों और किताबों में रहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल, ग्लोबल को लोकल के साथ आप कैसे करेंगे? जब आप ग्लोबल कोई आता है तो जो लोकल आपका जो रिहायशी इलाका है वहां पर आप बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं ताकि वो लोकल दिखाई ना दे, और ग्लोबल जो है उसकी गाड़ी उस सड़क पे से निकल जाए। तो आप कैसे बताएंगे ग्लोबल और लोकल क्या है? बहुत सारी। मेरा मानना एक लफ्ज में है कि इंसान को खुद अपने आप से ईमानदार, जिस दिन वो अपने आप से ईमानदार हो जाएगा, देश उस दिन अपने आप बिखर जाएगा, और जब तक वो बेईमान रहेगा तब तक यहाँ कुछ नहीं। देश हमारा सोने की चिड़िया पहले भी था और सोने की चिड़िया आज भी है, लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि हम उनके जो ठप्पा लगा दिया उन्होंने कि ये डेवलपिंग कंट्री है, हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। हम डेवलपिंग सेव योर मदर अर्थ, इट विल सेव। अगर आप अपनी अर्थ, अपनी मदर का ध्यान रखते हैं, मदर आपका, सो मेरा ये कहना है कि आप अपनी मदर अर्थ का भी ध्यान रखिए और आप अपनी एक्चुअल मदर का भी ध्यान रखिए जिसने आपको बड़ा किया है, और मदर की मदर का भी ध्यान रखिए क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, समझे? तो तभी आने वाली जनरेशन कर सकती है, अदरवाइज मैं सबके साथ ध्यान दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बाकी तो काम हम कर ही दिया है।
So, or brain neuroscience. How to improve your brain? What is your brain power? How to excel in life? कैसे आप 100 में से 110 नंबर लेने पे टीचर को प्रेशराइज कर सकते हैं कि उस बच्चे को 110 नंबर मिले, इतना अच्छा लिखा है। ब्रेन को कैसे कैप्चर करना है, कभी मौका मिला तो इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। हाउ, बिकॉज सब कुछ अच्छा है, हमारी मानसिकता खराब है। हम हर चीज के अंदर से कुछ ना कुछ अपना फायदा सोचते हैं। That is why we are not able to excel in our life. Thank you. Now I would like to extend heartfelt thanks to Dr. Deepak Sharma for the thought-provoking lecture. Sir has truly enlightened us and provided valuable perspective on role of science and technology in sustainable future, and told us about the mental health is important for innovations and give the message healthy body has a healthy brain and the trained brain has a healthy mind. Thank you so much, sir. Now, I request Principal Ma'am and conveners our chairpersons will come in 2 to 3 minutes, so we have to wait. If you have any query, then you can ask to Dr. Deepak Sharma. और मैं आप सबको को ये बताना चाहूँगी, सर यहाँ पर हमारे पास दूसरी बार आए हैं। एक बार हमने इनको साइंस डे पे बुलाया था, तभी सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था और वी विल श्योर कि नेक्स्ट टाइम भी फ्यूचर में हम सबको बुलाते रहेंगे। चलिए इनविटेशन तो पक्का हो गया। थैंक यू। कोई बात नहीं। सेशन शेयर कर रहे हैं, सोर्स पर्सन्स को आ रहे हैं हमारे साथ सेशन लाइन अप करके, इसलिए वेट कर रहे हैं उनको। आई एम श्योर कि आज के इस सेमिनार से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। स्टूडेंट्स से मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जितनी भी बातें आपने यहाँ पर सुनी है, उनको ये नहीं यहाँ पर सुनकर छोड़ जाना है, उनको अपने साथ कैरी करना है। जैसे सर ने मेंटल हेल्थ की बात की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनोवेशन। तो आपने अपने हेल्थी माइंड के ऊपर जो काम करना है, उससे पहले हेल्थी बॉडी पर, देन हेल्थी माइंड।
We are also waiting for Dr. Ranjit Singh and Mrs. Sujata. Waiting for Dr. Ranjit Singh and Mrs. Sujata to chair the session, and they are about to finish the session. Now, I request Principal Ma'am and conveners of the seminar to honor the resource person who have chaired the session. Dr. Ritu Kam, Department of Economics, RKST College, Kerala. And I request also Dr. Deepak Sharma sir to honor the resource persons also. Dr. Ritu Kam, Department of Economics, RKST College from Kerala. Now I welcome Dr. Ranjit Singh and Mrs. Sujata to who chair the session. Welcome you all. Now I request Mrs. Manjeet Rani, Department of Chemistry, Yamuna College, Yamuna Nagar. I request Dr. Ranjit Singh, Department of Economics, Yamuna College, Yamuna Nagar. Dr. Ranjit Singh. Now I invite Mrs. Sujata Sharma, Department of Geology, Government College, Panchkula. Mrs. Sujata Sharma. Thank you all. Now I request Mrs. Karan for convener of the seminar to present the report of the seminar. Thank you so much. A very good afternoon to all of you. As we conclude this enlightening seminar, it is my privilege to read a report and extend our heartfelt gratitude to all those who have contributed to its success. First of all, I express my deepest appreciation to our esteemed chief guest, Dr. Upasana Joshi, for honoring us with her presence,
and sharing her profound insights. We also extend our gratitude for the sponsorship provided by ICSSR. Their generous support has been vital in bringing this seminar to fruition, and we deeply appreciate their belief in our vision. I would also like to extend my sincere thanks to our distinguished resource persons, keynote speaker Dr. Anish Duaji, second resource person Professor Pradeep Chauhanji, and to our valedictory speaker Dr. Deepak Sharmaji. Sir, your practical approach for sustainable development has provided us with actionable insights that we can apply in our respective fields. Thank you so much, sir, for delivering such impactful presentation. The collective contribution of all our esteemed resource persons have significantly enhanced the depth and breadth of our discussions today. I thank you, sir, once again. Total 127 participants registered in the seminar and 72 papers were contributed. Very nice presentations on various aspects were given by participants. Presentations Mrs. Manjeet Kaur, Department of Chemistry, MLN College, Yamuna Nagar. Dr. Dalbir Singh, Department of Economics, MLN College, Yamuna Nagar. Dr. Ritu Kant, Department of Economics, RKST College, Kaithal. Mrs. Sujata Sharma, Department of Zoology, Government College, Panchkula. And Dr. Mrs. Seema Sharma, Department of Chemistry, GNGCollege Yamuna Nagar, who chaired our technical sessions. Their expertise and guidance have been instrumental in steering our discussions and enriching our understanding. I would also like to thank my management, especially Director Ma'am, whose guidance and constant support give us zeal to conduct all the activities with enthusiasm. Special thanks to Principal Ma'am for her continuous guidance. I would be failing in my duty if I don't acknowledge the efforts of our dedicated organizing committee and volunteers. Your meticulous planning and tireless efforts have ensured the seamless execution of the seminar. Your commitment behind the scenes has been instrumental in making this event a success. A special thanks to our participants. Your active engagement and enthusiasm have enriched our discussions and made this seminar a truly collaborative experience. Lastly, I would like to acknowledge the non-teaching staff and also to the technical support team for ensuring that all our sessions run smoothly at all the three different venues. In conclusion, thank you all once again for your invaluable contributions and participation. You have made this seminar a memorable and impactful experience. Thank you. Have a great day. All the delegates and guests are invited for lunch. Thank you. So much done. Lastly, we invite everyone for the lunch where we can continue